Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning. So today we have to discuss the paper supply chain analytics, right? So in supply chain analytics, we'll be starting right from the beginning. That is chapter number 1. We'll be discussing all the 7 units that we have in our syllabus, along with the case studies and the type of questions which we can expect to be asked in our exam. Okay. If we'll have time, then we'll be also discussing the this one, your MCQs. Okay. So what I'm doing is I'll be sharing my screen. You have to just let me know if the screen is visible to you. Again, we'll be starting with the discussion on the syllabus, and then we'll be go ahead with the chapters. Okay. So here's the screen I've shared, and on the screen, if you can see the syllabus. Yes, ma'am. Okay. So see, supply chain analytics. So I guess you have a good idea and a good command on all the on at least the understanding of the paper we are doing, like the supply chain. You have a good understanding till now when we are discussing supply chain analytics, and we have already discussed in detail the supply chain management. I guess my students have a good command on the understanding of the topic that we are discussing, at least have an understanding of what does supply chain means, what are the elements, who are the component, why it is done, and what is the importance, why we need analytics. Okay. And what is the role of supply chain managers, what are the risks that he can mitigate, what are the uncertainties there, and what are the things that need to be managed, right? So all these, the basic things are already done when we are complete, when we are actually done with the supply chain management. We have built a good pillar, we have built a good base, and now we'll be just discussing in all the chapters, we'll be just focusing on the analytics, the focusing on the tools that is being, the models that are being used by the companies. Okay. So yesterday I shared the PPT. I guess that is like you are able to open the PPTs. Yes, ma'am. Okay. All right. I have not sent the readings of those because they're not, they're already covered in the book. Okay. So I have not shared the readings, but just this one, the class, if you have attended the class, and the PPTs are enough. Okay. So see, just see this and this one, syllabus of supply chain analytics. Here we have 7 units. The first unit discusses on the two issues. The first is problem driven. Okay. And the next is data driven. So these are the two types of supply. These are the two, not the types, these are the two issues in the supply chain, and these are the ways to how the supply chain is dealt with. If there is any like continuously, you can say, or at a point of time, how the supply chain is being dealt into, this is the way. The first way, the few of the organization, they go for data driven, and few of the organization, they go for problem driven, and there are organizations who combine these two. So we have to have an understanding of what is problem driven and what is data driven supply chains. Then we need to discuss what is the big data. If you remember, this was the seventh unit in our supply chain management. Okay. So this big data and supply chain was the seventh unit of your supply chain management. So if you have just seen the PPT or sorry, not PPT, but the PD word file that I have shared of the unit number 1, it was combined, like for this unit number 1 also, supply chain analytics unit number 1 also was also covered there in that unit. Okay. So big data in supply chain is the same that we have to read in this one, unit number 7.
Analytics techniques in supply chain management. So what are the analytical techniques used in supply chain management? We need to discuss in detail the descriptive, predictive and prescriptive. Right. So this is all about unit number 1. Unit number 2 will be discussing on the plan. How can be analytics used in demand planning? How can it capture the different sources? What are the models that are being used and how can the price be optimized? Then unit number 3 is all about source. Source we have already discussed. Source means like it is related to the supplier. Okay, from which we are taking our raw material or our goods. Okay, so unit number 3 is sourcing, means we have to understand whether we want to self made it or yeah, whether we want to have our own manufacturing department or we want to outsource those. Okay, so we have to discuss on make or buy decision. Then we have to discuss on the logistic and transportation inbound. Okay, so logistic and transportation also we were having a separate chapter in our supply chain management, but then that chapter was more of related to the modes and network. But here we have to read more about the what are the algorithms and route planning that is being done. Okay, then we have to get an understanding of supply chain contracts. Contracts means the agreement or that is being made, how it should be made and how can analytics be used there in making of the contract. Okay, then the fourth unit is about the making, means we have to discuss there the sales and operation. When you are like you are having your own manufacturing, then how you are operating, okay, your operation plans and the location of the plants and the product line mix. So all these, the planning and scheduling, all these will be discussed here. Unit number 5 discusses on the delivery. Okay, it means how about the distribution channels. What are the distribution center? What are the locations of the distribution center? The inventory policies and all these vehicle routings for deliveries will be discussed. Unit number 6 is all about the return. Okay, and also this was the unit number 8 in our supply chain management. Okay, so there in unit there that unit number 8 was not discussed so thoroughly because here we had to discuss already this one, unit number 6. So we'll be discussing this here only. Okay, so analytics in reverse logistics, we have already understood ki what is reverse logistic. Now we'll be studying ki how can analytics be used in the reverse logistic and how can it help in the reverse distribution plan and vehicle rerouting. Okay, all right. So, and last is the unit number 7, analytics in supply chain carbon footprint. Though I have thought of giving this unit to you as an assignment, but since we don't have time, we'll be discussing this unit as well in the class. Because yes, of course, this unit is an additional unit, but then you'll be getting question from exam from this unit also. There will be one question from this unit as well. So you cannot leave this unit. Okay. So every unit is equally important. I've already discussed the question pattern. You will have one question that will be the case study, and that question will be a compulsory question for 20 marks. Remaining, you will have 6 questions from all the chapters. Uh, and the question will, of course, be in parts. Okay, you will not be getting a one single question for 12.5 marks, but rather the question will be broken into parts. You need to answer each part of the question because each part of the question will be assigned some weightage. If you'll not be attending any part of the question, then that part of the weightage or marks will not be assigned to you. Okay. So the you'll have the 6 questions for 12.5 marks, but from there you have to choose just 4 questions. Okay, any 4 question you have to choose and mm, yeah, those questions will be for 12.5 marks and the remaining 30, you have the MCQs, right? So this is the exam pattern, and so you cannot leave any question any of the chapters, but yet there will be options. So uh, maybe you can just choose. Okay, so and in class we have already discussed
thoroughly we have discussed till unit number 6. In unit number 6, just the last topic, I guess, was left out, the vehicle routing for return collection, and unit number 7 is left. Okay, so but no worries, we'll be starting from the beginning, we'll be discussing from the very beginning, but that discussion will be in brief because it has already been covered a number of times in the class, right? Okay, so everyone is here comfortable with the syllabus. See, stick yourself. Yeah, okay. Thank you. So stick yourself to the syllabus. Although you have like supply chain analytics is written by me only, so I know what is there in the book. So whatever is there in the book is important. But yet I am telling you, be stick. I also had planned your syllabus, your lesson accordingly with your syllabus only. But still, I am requesting you to see the syllabus yourself and study topic wise. Okay, because in exam you'll be getting the questions topic wise. Okay, and each topic or each part will be assigned the weightage. Okay, so do accordingly, and in class also I'm thoroughly with the syllabus, and I am doing each and every topic, picking each and every topic from the syllabus only. Okay, so with this, I guess you are now comfortable with the syllabus, and now we are moving to this our chapter discussion. Okay, so again, you are requested, if you are not able to see my screen or if my voice is broken in between, you can just inform me then and there itself so that I can stop and check the problem. Okay. So I guess screen is not visible right now. I'm sharing again. So class, my screen is visible to you all. Yes, ma'am, it is visible. Okay. All right. So can we start? We can start, right? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay, okay, thank you. So, see, we have to discuss first on what is problem driven and what is data driven. So, see, actually, the thing is, earlier, this data was not important for the, especially for the supply chain managers, especially for the supply chains. Okay. So, in supply chains, earlier, the manager or the organization was not using data, but then after this IoT thing and AI into this and e-commerce, after the e-commerce been taking up the market, this data, use of data or data analytics and supply chain has become aggressively important. Okay. So now almost all the companies, whether they are the traditional company or the modern e-commerce or m-commerce company, they are excessively using this data analytics in its supply chain.
Okay, so now the question arises whether to use data analytics only at a particular time, only on an event, on the happening of some issue, or the data analytics should be used throughout the uh, production, throughout the supply chain, or it should be used at a particular point of time when there is any issue. If there is any issue, then the data analytics should be used just to solve that issue, or it will be beneficial for the organization if they use data analytics. Data analytics means, when we are actually using the word data analytics, that means what we are doing is we are continuously collecting the data, we are continuously running models and trying to get the pattern of the event, trying to get the trend, and is trying to make some decision, trying to get some knowledge out of all the information available, right? So this is what data analytics means. We are analyzing the data using some models and techniques and tools, and after the analysis we are in a position to take up some decision. Okay, so the question here is whether to use this data analytics for the decision making only when there is any severe issue with the organization, with the sales, with any other important important event of the organization, or it should be used by the organization thoroughly in its supply chain, in its organization, in its production, and everywhere. Okay, so that is why the topic the topic is named as problem driven to data driven supply chain. So problem driven, from the name itself you can just have an idea that data is being used by the organization, data has been dragged into the organization data एनालिटिक्स को ला ही रही है सिर्फ एक बात के लिए, एक इश्यू के लिए, क्योंकि उनके पास एक प्रॉब्लम आई है। सिर्फ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का यूज किया जा रहा है, और ये प्रॉब्लम ही ड्राइवर है जो डेटा एनालिटिक्स को उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आ रही है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज प्रॉब्लम ड्रिवन। तो वो डेटा एनालिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन में आया ही क्यों, डेटा एनालिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन में यूज ही क्यों हो रहा है, क्योंकि नाउ देयर इज एनी इशू और प्रॉब्लम विद द ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर, see this term data driven supply chain. Data driven means data is already the driver in the supply chain. The organization, that particular organization is already using data in its organization, in supply chain, throughout the all the production and everything. Okay, so here the discussion is which one is more suitable, because using data is not easy. If you have to use data, then you have to continuously collect the data, and the information overload happens, and at times you have a lot and lot of data, but then you are not able to make any sense out of that. You are not able to get any proper information or knowledge. You are not able to drive any knowledge or make decision out of that. So collecting data is not an easy task. You need sophisticated tools and techniques. You need human resources, you need technical persons to analyze those data, because it is not just that you have to collect data. By after collection of the data, the important thing is you have to analyze the data. Okay, so that appointing some technical person, having that human resources and using those sophisticated tools, they are costly to the organization, they had a cost to the organization. So that is the reason the organization is now at a question whether to use data analytics only when there is problem, or shall be used throughout the lifetime of the organization. Will it be helping the organization to have some good reputation, to gain profit, to gain goodwill, yeah, or in the smooth running of the whole supply chain. Okay, so the organization wants to make up the decision because a heavy cost is involved here. Okay, so
Okay, so here in this unit only, we'll be discussing how, like, from traditional to modern supply chain, how we have like moved from traditional. Traditionally, we have already discussed that traditionally data analytics was not used. It was just the simple supply chain where we used to discuss that these are the element, these are the parties, these are the logistic and distribution routing and everything. We were not at all using data analytics. Now when we have moved from traditional to supply chain, modern supply chain, then now there is a shift from using data in all of the processes. Let it be distribution, let it be logistic, let it be inventory management, let it be the supply chain contract. Okay, everywhere the data analytics has been used, and this is the e-commerce company which have made it so user friendly and everything, and that it is being used in every part of the supply chain. Okay, so these modern these e-commerce companies, their supply chain is only referred to as the modern supply chain management. Okay, so the next discussion would be around the importance of data in decision making. We are already discussing that the data is very important in decision making. Only if you have a proper data, first the data needs to be accurate. Next, there needs to be persons who can there need to be persons who can analyze those data. Okay, so and after the analysis there should be resource person who can make decision from those data. So the data is so very important. Okay, only when you have a correct data, then only you will be in a position to make a proper demand forecasting. Then only you can make a proper planning for your customers. Okay, so okay, so this will be this discussion, and the discussion that we started was from the problem driven versus the data driven approaches. So see, yeah, the first slide here discusses on how it has evolved from traditional to modern, and this is all done. That now we have transformed ourselves from the traditional way to the advancement in technology, because the customers expectations has also changed. The customer now want to have the this real time data sharing. They want the real time tracking, right? They want the product to be delivered within the given schedule. They want the product to be delivered on the same day. So because of the expectations of the consumers and because of the advancement in technology, we have now shifted ourselves to the modern supply chain management. Okay, so this is the case study, the Ford Motors company's assembly case study that we have discussed. The three good case studies that we have discussed. The first one was the first revolution that was brought by the Ford Motor Company assembly line. Okay, so there we discussed how traditionally they were they were having their supply chain and they were not using this analytics, and then later on how they have trans like they have transformed themselves to the modern supply chain. Okay, so earlier the focus of this, we are discussing the case study of Ford Motor Company. Okay, so earlier the focus was on, basically the focus of the Ford company, for Ford Motor Company, was on basically streamlining the production and minimizing the cost. And how they were targeting through economies of scale. You know what is economies of scale? Economies of scale means when you are producing goods, basically they are being produced in a lot, means you are producing so many quantities that you get that your cost of production per unit becomes lower. Okay, so production per unit becomes lower. So that is what is known as economies of scale. So the Ford Motor was earlier, what it was doing, as when it was not using the data analytics in its supply chain, it was just streamlining the production and was trying to minimize the cost through economies of scale. Okay, however, because of this approach, this led to overproduction. Okay, why? Because they were focusing on economies of scale. They were always trying to produce the goods, produce this motor car in lot, and because of those
production of economies of scale, it led to overproduction and limited flexibility, because they, since they were produced in batches or they were produced in lots, so there was no space of customization. Okay, so there was no flexibility. So there was no flexibility in responding to the market changes. Okay, now then come the transition phase. Transition phase means now all the organization, means the inventory, the distribution, the production, they were integrated among themselves. Okay, they were coordinated in such a way that one can know the inventory of the other. Okay, and one can know the position of the other. So they were integrated, and also the visibility was increased. What does visibility means here? Means that the data was the information was seamlessly transferred from one department to the other. Okay, so they, every department was properly informed about all the okay, orders and all the inventory of the other organization. Okay, so this was the transition phase. Okay, so here the market globalized. Here the market globalized and the consumer demand, it increased, and company recognized basically the need of greater integration and visibility across their supply chain. So in the transition phase, the company analyzed that yes, now they need a proper integration, and now they need visibility across all the supply chains. Okay, then we discussed on the case study of Dell build to order model, where we discussed at how Dell also revolutionized the computer manufacturing, because earlier it was build to order model. Okay, build to order model. So build to order model means it was all ready, but then there was customization available. Okay, so Dell what it did, did not, it like basically worked on the preponement strategy, and it gave the build to order model. Okay, so that allowed the customers to customize their computers, right? Now what was the transition aspects? So this model, this build to order model, this actually required tightly integrated supply chain. What does tightly integrated supply chain means? Means all the suppliers or all the party to the supply chain should be integrated and should be well informed about the position of all other members, right? So build to order is just like JIT model only. JIT model means just in time. As you are given the order, you have all the suppliers of the supply chain should be active and should coordinate and try to complete the project as at a least at a minimum period of time, right? So that is what is known as integrated supply chain. So build to order model, it requires highly integrated supply chain with stronger supplier relationship and sophisticated logistics. Then only it would be possible to supply within the given period of time, to deliver the order within the given period of times. Okay. So Dell's success in this providing the build to order model, it highlighted the importance of agility. You remember we have discussed the concept of agility in quick response strategy. That quick response strategy is one such strategy which the organization can adopt to like build up a good relationship, to build up firstly to uh, to advance the supply chain, to have a valued customer. Okay, and then to build a close relationship with its key suppliers. Okay, and also to provide customized goods to the customers to basically satisfy the expectation of the customer. Okay, so Dell, it highlighted that the agility is very important in supply chain, and the customer focus is another very important thing in the supply chain management. Okay,
So when we are discussing the modern supply chain, we are just discussing of the data analytics being used, the the supply chain managers, they have now become more agile, they have now become more sustain, they are now using some sustainable ways, like they are using e-vehicles, or they are matlab, they are active in the carbon decarbonization, they are active sorry they are active, and they are aware about the carbon uh, 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 basically carbon regulations, and they are aware about which product and are producing more carbon, and they are active about the reduction of those use of reduction of the use of those products basically. Okay, so they are more active towards sustainability, they take care of the environment and everything. Okay, so the modern supply chain, they are supply chain manager, they are active and responsive to the customer, they are active and responsive to the environment, and they are actively and rapidly using these technologies, the digital technologies, to advance their supply chain management and to build the value for the customer. Okay, so this modern supply chain management, it is basically based on the digital technology, which emphasizes the sustainability, also the ability to rapidly respond to the changing market. This is what is known as agility. Agility का मतलब ही क्या होता है? Agility का मतलब होता है your activeness to respond to the changing market. If the market demand has changed, and how responsive you are as an organization to change your inventory and to change your production. Okay, so how active you are to provide the customer what they are demanding. Okay, so if you remember the case of this Nokia, if you remember the case of the Xerox company, if you remember the case of the uh, there are many companies who did not uh, took this agility concept seriously, and they keep on working on their traditional way, and thus they lost the big market that they were sitting on. ठीक है? If you remember the case study of Nokia, so was the leading uh, Nokia was having the leading market in this mobile industry. Okay, but then it did not understood the importance of agility, it did not understood the importance of using digital technologies in its, it did not understood the importance of the digital revolution that came there in India. Just 1 minute. Okay, ठीक है. Right. Okay, so this is what, when we are talking about the modern supply chain, we mean agility, we mean sustainability, we mean they are active with the technology. Okay,
तो यही तो डिफरेंस है ट्रेडिशनल सप्लाई चेन और मॉडर्न सप्लाई चेन में, राइट? देन वी डिस्कस्ड a good case study of Amazon, which has advanced supply chain. You know that the supply chain of the Amazon is so advanced that it is using all the sophisticated technology. It is using this predictive analytics in its inventory management also, and because of those technologies and all, they are able to provide you with the with your order within the day or on the same day itself, okay, within 2 hours. So with all these, because of the agility, because of the responsiveness, because of the use of the digital technologies and data analytics, they are able to provide you the advanced supply chain, okay. So हेलो मैम। Amazon basically they, yes, मैम yes please. मैम थोड़ा सा हिंदी में बोल लो क्या? हाँ बिल्कुल, yes yes. एक्चुअली एक दो बच्चे कह रहे हैं तो इसलिए। क्या? सॉरी। एक दो बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा कि मतलब हिंदी में हो जाए अगर क्लास तो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. सो थैंक यू मैम। okay, so we are discussing about the Amazon case study. तो Amazon, how it is like we are discussing कि Amazon जो आपको within the day और prime delivery services जो provide करती है, ये कैसे provide कर रही है? ये आपको provide कर रही है because it is able to use the robotics, it is able to use the advanced technology all in its warehouse, in its inventory management, in its delivery optimization. So everywhere Amazon is very using all the sophisticated technologies and all, and is using data analytics rigorously. ठीक है? That is the reason ki it is able to serve you in such a smooth way. The supply chain of the Amazon, I requested you in the class that you may just check on the supply chain management, supply chain of the Amazon and Flipkart, because Amazon is like it. It is the best case study that you can study for the modern supply chain management. Okay, so just see here, Amazon supply chain management, it uses or it exemplifies the use of real-time data analytics. Real-time data analytics means the data is being updated real time, है ना? जो आप उसमें देखते हो order tracking जो करते हो, that is real time. Okay. Automation and customer centric approaches. So it is very automated. That means it is automated in its logistic, it is automated in its distribution, okay. And customer centric approaches means it is very dedicated to the customer. The returning and everything is so smooth that you don't require any other assistance, okay. So the company's ability to deliver a vast era of products quickly and efficiently, it showcases the power of the modern supply chain. So if you have to give the example of the modern supply chain, then you can use the case study of the Amazon. ठीक है? तो आप Amazon का केस स्टडी देकर बता सकते हो कि ये कितने एक्टिव है इन देयर सप्लाई चेन, ये कितने एक्टिवली दे आर यूजिंग द sophisticated algorithm and robotics in its supply chain. Okay. Then another case study that we took was the Zara fashion, Zara fast fashion. Zara का case study लेने का reason क्या था कि Zara is the only, you can say, company in the fashion industry basically that is able to change its inventory. मतलब पूरा का पूरा वो store 2 हफ्ते में चेंज कर देता है. अगर अगर मार्केट में कोई भी नया डिजाइन या कोई नया कलेक्शन आता है, then it is able to like come up with those fashion within 2 weeks. Within 2 weeks वो अपनी पूरी की पूरी इन्वेंट्री को चेंज कर देता है. So and you know it is very difficult and costly deal for the fashion industry, because fashion industry में fashion बहुत जल्दी outdated हो जाता है, and the uh, taste also changes very fast, है ना? Right. So
that is why Zara is a, you can say, a pioneering case study for this for the fashion industries. ठीक है, तो Zara case study can also be discussed. Okay, so you can just see कि Zara's success, it is built on its ability to rapidly design, produce, and distribute the clothing in response to the real-time fashion trends. Okay. And this required, तो how it is able to change, ये इतने जल्दी, अब जैसे ही मार्केट में कोई नया ट्रेंड आया या कुछ भी नया फैशन शो हुआ, अकॉर्डिंगली अगर मार्केट में टेस्ट चेंज होता है, how it is able to change up all its store? It is able to change because it has very close collaborations with the key suppliers, and also it has advanced inventory management, है ना, and a sophisticated logistic network is also so well designed that it is able to deliver the new trendy product. Okay, so this is the key of the Zara. And Zara's, basically its approach is to minimize the waste and reduce the traditional fashion industry's lead time, because traditional fashion industry, actually the lead time is very high, because once, like अभी आपका जो ये फैशन शो हुआ, तो उसमें whatever clothes were launched and all these things. So accordingly, now if the market start demanding the same type of products, then it has to be designed and it has to be produced, and then that product is brought to the store, right? But Zara, what it does is like, जो ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में जो लीड टाइम है वो मंथ्स टू मंथ्स लगता था, उसको वीक्स करने के लिए, to like produce the trendy product and bring it in the store within weeks, it has used very sophisticated data analytics uh, in its supply chain. Okay, in all its logistic also, so that there should not be any waste of time in distribution. Okay, so we discussed the Zara case study, and we discussed that how supply chain, मतलब how data analytics basically, अगर आप data analytics use करोगे तो उससे कैसे आपको like what are its implication, उसका उसको आप उसका फायदा क्या है, और इस and what are the future directions in it. So you can just see that we have discussed the modern supply chain practices, and we discussed the case study of Amazon and Zara, and those two case studies it demonstrated, the Zara and the Amazon case study, ये देखकर आपको पता लगा होगा कि how you can integrate the advanced technology, है ना, and if you adopt the customer centric focus, you can lead the industry, right? So uh, it is expected that the supply chain managers should now use the advanced technologies such as IoTs, AI, blockchain, all these. Okay, क्यों यूज करना है? ताकि विजिबिलिटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, सिक्योरिटी बढ़े. ओके, and also the sustainability. Okay, so this is what is expected from the supply data analytics in supply chain. Importance of data in decision making, we have discussed that data is really important because it helped in decision making. Regarding what? Regarding the collecting and analyzing the data, and to have a strategic business decision making, business decision making. Not just the decision should be made, it's the decision should be strategic means, कहीं भी अगर word strategic आता है ना, if you are strategically preparing for your exam, इसका मतलब क्या हुआ, आप एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन स्ट्रेटेजिकली, स्ट्रेटेजी का मतलब मैंने कल भी बताया था, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है जहां आपके पास टाइम बाउंडेशन आ जाए, रिसोर्स, मतलब आपको पता है कि आपके पास इतना लिमिटेड टाइम है, आपको पता है कि आपकी कैपेबिलिटी इतनी ही है कि आप दिन में 4 घंटे ही बैठ सकते हो पढ़ाई के लिए, आपके पास सिर्फ 2 घंटे का ही टाइम है, ये आपकी लिमिटेशन है. तो जब आप अपने लिमिटेशंस में रह करके उस गोल को या उस ऑब्जेक्टिव को पूरी करने की कोशिश करते हो, तो उसी को तो क्या कहते हैं, उसी को तो कहते हैं स्ट्रेटेजी, है ना. तो आप स्ट्रेटेजी बनाते हो कि विद इन द गिवन लिमिटेशंस, है ना,
I have to achieve my goal. तो उसी को strategy कहते हैं. And same here they are discussing कि if you are using data analytics, then how you can make some strategic business decisions. Okay. तो अगर आप डेटा एनालिटिक्स यूज करोगे तो क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि आपकी जो एक्यूरेसी होगी, लाइक डिमांड फोरकास्टिंग की जो एक्यूरेसी होगी, वो काफी हद तक एक्यूरेट होगी, वो काफी हद तक एग्जैक्ट होगी, राइट? So it will help in enhancing your data accuracy and objectivity. It will help you in predictive analytics. Predictive analytics मतलब आप predict कर सकते हो beforehand कि आपका customer क्या demand करेगा, है ना? Accordingly आप उसको produce करवा सकते हो, आप inventory में उसको ला सकते हो और फिर nearest warehouse में रख सकते हो और उसको customer को जो है प्री हैंडेड डिलीवरी दे सकते हो. ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स अगर आप यूज करते हो तो इट कैन enhance your accuracy, it can help you in having a predictive analytics and forecasting. It can help you in the risk management also. Okay, if you remember the previous class, the supply chain management, we discussed ki if there is the visibility and if there is a proper use of the data analytics, then if your supplier is in Iran or Iraq, then he can just let you know beforehand only that there may be some risk. ओके, तो रिस्क मैनेजमेंट भी अवॉइड होता है अगर आप डेटा एनालिटिक्स यूज करते हो तो. ठीक है, देन पर्सनलाइजेशन, यू कैन लाइक give the option to the customer to personalize or customize the product. Okay, then operational efficiency भी increase होता है, strategic planning बनती है, innovations होता है, cost reduction भी होता है, regulatory compliances भी आप meet कर पाते हो properly because everything is being automated through some algorithms, right? And also as a result of all these, the employee performance is also increased, leading to satisfaction, right? तो इतने सारे फायदे हैं ऑफ यूजिंग द डेटा एनालिटिक्स इन सप्लाई चेन. ओके, now here we come on the discussion of the problem driven versus data driven. ये discussion मैंने बहुत बार कर लिया तो I'll not be going in detail, just the brief discussion that problem driven जो है वो particularly जो है वो एक point of time पे होता है. ये एक methodology है. What is this? This is just a methodology to address certain challenges and opportunity. कोई भी challenge या opportunity आए तो उसको आप meet कैसे करोगे, उससे deal कैसे करोगे, तो ये एक तरीका है कि आप क्या करोगे, data analytics use करो. Okay, so see here, प्रॉब्लम ड्रिवन अप्रोच, इट बिगन्स विथ अ स्पेसिफिक इशू. कोई स्पेसिफिक इशू हुआ है या फिर कोई चैलेंज हुआ है दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. द होल फोकस इज ऑन द प्रॉब्लम ओनली. it will not be general, it will be on the problem. Like for example, अगर आपका सेल्स डाउन हो गया, अगर आपको लग रहा है कि हर साल सेल्स जो है वो डाउन होता जा रहा है, मीन्स द इशू इज विद द सेल्स, तो आप क्या करोगे? आप क्या ऑपरेशंस देखोगे? नहीं. क्या आप मैन्युफैक्चरिंग देखो, कस्टमर सर्विस देखोगे? नहीं. योर मेन फोकस इज सेल्स. सेल्स क्यों डाउन हो रहा है, आप सिर्फ उसी प्रॉब्लम को देखोगे और उससे अटैच्ड जो इशू होगा उसको देखोगे, है ना? तो ओके, सो दिस इज द केस. एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी जो है कि एक बार क्या हुआ था कि दिस लाइक वोडाफोन, नो, इट वाज एयरटेल और वोडाफोन आई गेस. सो वोडाफोन at one point of time, many of its customers started switching to Jio and Airtel. So Vodafone just analyzed this, that its sales is going down and it's there, basically the customers are switching to another network, let it be Jio or Airtel. Okay, so then it used the problem driven approach. It analyzed ki why the customers are switching. Okay, so that means it was not using data analytics earlier, right? It used only when there was one problem. Okay, and it used data analysis just to solve that particular problem, right? So problem was identified कि why the customers are switching. Okay,
Then the analysis was done. How the analysis was, the customer feedback was taken, ki how you are feeling, is the rate high, or is there any issue with the network or something like that. Then support calls were made. Okay, at times, if you have ever experienced that, if you want to switch one network to other, then if you are switching like from Airtel to Jio, then you'll get a call from the Airtel support this one center, and they'll be asking you what is the issue, why you want to switch. So similarly they just did this. For the that point of time, they took up the feedback, they made support calls, and they tried to identify the pattern and the common reasons for leaving the customers. Okay, right. And then they come to the conclusion, the solution, that based on all the analysis that they did, they implemented all the uh, algorithms, and then they came to know that there was some issue with the network. Okay, so network infrastructure improvement needs to be done in some of the areas, and there was also the poor coverage. This was the reason why the customers were switching. Okay, so this way the problem driven approach works on. However, the data driven approach, in data driven, what happens, like for example, if you have ever experienced the case of Geo, if you want to switch from Geo to any other network, then you will be repeatedly receiving the support calls and all, because they have already ensured that they did not introduce data analytics only when there is an issue. Rather, they have the data driven approach continuously throughout their system, है ना. आपको जियो में कोई भी issue आएगा, कुछ भी आपको है, तो they have the support calls and they कंटिन्यूसली टेक अप योर फीडबैक्स, है ना. उनका मान लो सेल्स डाउन नहीं भी जा रहा है, कुछ भी इशू नहीं हो रहा, बट देन ऑल्सो दे कीप ऑन कलेक्टिंग द डेटा. आप कभी फोन में भी बात करोगे, इफ यू वांट टू नो एनी ऑफ द सर्विसेज एंड एनीथिंग, दे विल बी आस्किंग यू फॉर योर रिव्यू, योर फीडबैक एंड योर एक्सपीरियंस. ओके, सो दे कीप ऑन कलेक्टिंग ऑल दोज डेटा, and they from that data they keep on analyzing and trying to like improve their services, right, based on all the data sets. Okay, so they're continuously, what they're doing is they're continuously keeping the data, having the data analytics, they're continuously making the trend and trying to get the opportunity कि क्या opportunity और भी market में हो सकती है ना. So without any predefined problem, उनके पास कोई predefined problem तो नहीं थी, but then they are continuously like working on. Okay, सो इसमें इशू क्या होता है डेटा ड्रिवन यूज करने में, एक तो कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कंटिन्यूअस द डेटा इज बीइंग टेकन अप, कंटिन्यूअस देयर इज फिल्ट्रेशन ऑफ द डेटा. ठीक है, डेटा फिल्टर हो रहा है कंटिन्यूअस, देयर आर पर्सन हु आर एनालाइजिंग दोज बिग बिग डेटा सेट्स. यू कैन जस्ट इमेजिन कितना बड़ा लार्ज डेटा सेट्स होता है, उसको एनालाइज कर रहा है ना, कि what is the time period that the person is investing there, and all these things are being tracked on. Okay, so, and again there is no issue, they have to try finding out some opportunity out of those data. ठीक है, तो this is actually so costly and so rigorous, but then फायदा क्या है, फायदा ये है कि यू कैन ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी बिफोर all your competitors. Okay, and you can leverage out the data to make some strategic decision required in the near future. Okay, so ये फायदा होता है data driven use करने का. C class, you will be certainly getting one question related to the problem and the data driven. This is very certain. So I want you all to understand the definition, the difference, and some case studies also. Okay. So the data is collected. These e-commerce company, they are basically all the time they are collecting all the data. तो e-commerce companies जो है ना, ये तो almost सारे companies जो है वो data driven approach use करते ही करते हैं. ठीक है, they continuously collect all your data. आप जो भी return कर रहे हो या आप जो भी order कर रहे हो, they continuously keep taking up your data
ठीक है, your browsing history, your purchase history are all being collected, ठीक है, and then some insights means some algorithms are being run and the machine learning is being run, and उसके बाद क्या किया जाता है, आपका जो है डेटा एनालिटिक्स करके आपका पैटर्न, कस्टमर बिहेवियर पैटर्न निकाला जाता है। जैसे कि लाइकलीहुड ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स की आप ऐसे प्रोडक्ट्स, जैसे कि फॉर ईच कस्टमर इट इज डन, कि उसके बाद निकाला जाता है कि आप किस टाइप के कस्टमर हो, आप की कस्टमर हो, आपका सेगमेंटिंग किया जाता है ना। आप महंगे प्रोडक्ट लेते हो, आप किस टाइप के प्रोडक्ट लेते हो, कैसा लाइकलीहुड आपका है, यू ऑफन बाय, like you are often interested in clothing, or if you are often interested in any other this electronic products एंड ऑल दिस, ठीक है। तो इस टाइप से करके ये प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं ये आपको क्या करते हैं, सेगमेंट करते हैं, है ना। ओके, ऑन योर परचेज बिहेवियर ऑन ऑल दीज थिंग्स, एंड उसके बाद उसको अप्लाई कहाँ करते हैं, अप्लाई करते हैं आपको उस टाइप, आपको एक गुड शॉपिंग एक्सपीरियंस देने में। गुड शॉपिंग एक्सपीरियंस मींस यू विल ऑफन सी कि आप जो सर्च करते हो ना, आपको उसी टाइप से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ही मतलब जो है वो शो किए जाते हैं ना, रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर बीइंग एडवर्टाइज टू यू, राइट। तो ये शॉपिंग एक्सपीरियंस देने के लिए आपको, आपका क्या किया जाता है, ऑल द डेटा वेर कलेक्टेड, ठीक है, एंड ऑल्सो टू गिव यू सम रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स। ओके, सो दे collect all your data and they try to know your interest area, and accordingly they try to give you the experience and recommend you the products. Okay, and this leads to the customer satisfaction and also increase the sales, right. So this is what is the target of the data driven, and this is what is being done by the data driven. So now if we compare the two approaches, so if we start, so you know that problem driven, it started with some specific problem, है ना। प्रॉब्लम ड्रिवन स्टार्ट ही हुआ था किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम की वजह से, और डेटा ड्रिवन जो है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, इट वाज स्टार्टेड टू ग्रैब सम अपॉर्चुनिटी, राइट। उसके बाद अगर आप बात करो प्रॉब्लम ड्रिवन का, तो वो रिएक्टिव अप्रोच है। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई इश्यू हो गया फिर आप उसके बाद, जैसे कुछ घटना हो जाती है फिर आप रिएक्ट करते हो उसके बाद। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप एग्जाम दे रहे हो, इफ यू आर समहाउ नॉट एबल टू, आपने पढ़ाई नहीं की, समहाउ क्या लेट आपने पढ़ाई नहीं की, आप पढ़ाई नहीं करोगे, क्लास नहीं करोगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू get good marks in your exam। अगर आप, if you are not able to crack the exam or you are not able to get good marks in the exam, तो आप क्या करो, react करोगे, फिर आप क्या करोगे कि you will be finding some other ways और ये और वो, है ना। तो this is a reactive approach। proactive क्या होता है कि before the exam only you are alert and aware कि हाँ भाई मुझे करना है, this is the time and this is the things I need to do। तो आप proactive, अगर आप proactive रहोगे तो हो सकता है कि वो situation ही ना आए कि आपको react करना पड़े, है ना। तो सिमिलरली प्रॉब्लम ड्रिवन जो है वो एक रिएक्टिव अप्रोच है, क्योंकि एक प्रॉब्लम तो आ चुकी है, उस पर सॉल्व करना है। और प्रोएक्टिव, और ये जो डेटा ड्रिवन है वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, जिसमें आप पहले से तैयार हो, है ना। और उसके बाद प्रॉब्लम ड्रिवन जो है वो नैरोअर अप्रोच है ना। वो कुछ कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, उसके बाद फिर इस अप्रोच को जनरली लोग छोड़ देते हैं, है ना। एंड यू नो दैट द सेकंड वन इज द वाइडर अप्रोच। Next is innovation potential. So, while the problem driven approach is essential for addressing, means प्रॉब्लम ड्रिवन में क्या हो रहा है ना कि एक प्रॉब्लम आ गया, अब उसको फटाफट रिजॉल्व करना है ना। जैसे कोविड आ गया, तो कोविड एक इश्यू आ गया, अब उसको फटाफट रिजॉल्व करना है ना। तो आपका पूरा का पूरा फोकस रहेगा कि उसको फटाफट से कैसे रिजॉल्व करना है ना। जबकि डेटा ड्रिवन में, जैसे कि अगर अगर पहले से लाइक इफ द कंट्रीज आर अवेयर, और पहले से वो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स और मेडिकेशन और लैब एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं कि इस टाइप का कोई वायरस आएगा तो हाउ टू डील विद दैट, देन उस समय क्या होता है कि आप अपने एनालिटिक्स को भी बहुत प्रॉपर यूज कर पाते हो और आप इनोवेशन कर पाते हैं ना। rather than just to mitigate the solution you could have innovated for that, है ना। तो this is what is done in data driven। और उसके बाद नेक्स्ट इज
whether to use the problem or the data driven. Then in the class, if you remember, we have discussed that it is not advised to leave any of this. The organizations are basically advised कि आप data driven भी use करो और आप problem driven भी use करो, क्योंकि अगर अगर जैसे आप मान लो जैसे आप जानते ही हो कि जैसे जो लैब्स है, बड़े बड़े जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो लैब्स है और जो रिसर्चर्स है, वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूअसली रिसर्च कर रहे हैं ना, बट स्टिल कभी ऐसा होता है जैसे कोविड-19 हो गया जो अचानक से आ गया है ना, ऑल्दो देयर वर रिसर्चेस बीइंग मेड इन द हेल्थ इंडस्ट्री है ना, हेल्थ सेक्टर बेसिकली, तो बहुत सारे रिसर्चेस कंटिन्यूअसली लैब्स में चलते हैं, बट कोई ऐसा वायरस आ गया या कोई ऐसा इशू आ गया जिसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था, तो उसको तो सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम ड्रिवन अप्रोच ही लगेगा, डेटा ड्रिवन से तो काम चलेगा नहीं, बिकॉज डेटा ड्रिवन इज अ लॉन्गर प्रोसेस है ना, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, तो इट इज एडवाइज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू like adopt both of these. Okay, the data driven and the this one the problem driven. Okay, so all these are given here. So reactive approach, so here I have taken an example of retail store कि retail store में problem driven और data driven कैसे analyze होता है, कैसे use होता है, ठीक है, so this is the example of that only. Okay, so रिटेल इंडस्ट्री में कैसे रिएक्टिव अप्रोच या जैसे कैसे प्रॉब्लम ड्रिवन यूज होता है. ओके, द चैलेंजेस, कोविड-19 का हमने एग्जांपल दिया है जिसमें वी जस्ट डिस्कस कि हाउ सम ऑफ द कंपनीज दे वर एबल टू स्विच देमसेल्फ इनटू दिस वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट है ना, कुछ कंपनीज बहुत ही फटाफट जैसे कोविड-19 आया, दे वर स्पेशली द सॉफ्टवेयर कंपनीज, दे द आईटी कंपनीज, दे वर एबल टू स्विच देमसेल्फ टू द वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट, लेकिन कुछ ऐसे कंपनीज थे जो कि नहीं स्विच कर पा रहे थे बिकॉज दे वर नॉट रेडी फॉर दिस, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग द टेक्नोलॉजीज फॉर दिस है ना, तो they were not having the network है ना, they have not designed any network for this, so that's why they were not able to switch so easily. So these are the challenges of the problem driven approach कि आप ready नहीं रहते हो, problem driven जब आता है तो आप ready नहीं रहते हो है ना. So this is the case study where I have discussed the traditional struggles with the stock out and overstock. Okay, तो ओवरस्टॉक और अंडरस्टॉकिंग में कैसे इशू आ रहा था और उसको कैसे डेटा एनालिटिक्स के थ्रू सॉल्व किया हुआ है, राइट. Okay, next is we have to discuss. So I guess the class is comfortable with the data meaning of data driven and the problem driven, and the implication and the difference between the two concept, the difference between the two methodology, and when and how the organizations are using those. Okay, Yes, ma'am. if okay, thank you. So now we have to discuss on what is big data. So big data and how we can leverage the meaning. I've already told you that you get the multiple times benefit of using anything. If you are using your energy one time, then the result you will be getting will be in multiple times. So if you are using any technology uh, at one at one of the component of the supply chain, then you will be getting the result will be the benefit will be multiple times. Okay, so that is what here it means, that if you use data, then you can leverage the result, you can get the result. Okay, so
See, how is the data collected? Basically, there are internal sources and external sources of collecting the data. Like there are some software which are known as CRM, that is customer relationship management, and there is some software like known as ERP, enterprise resource planning. ओके, सो सीआरएम व्हाट इट डज इट, अगर आपके पास सीआरएम सॉफ्टवेयर है ना ऑर्गेनाइजेशन में, इसका मतलब क्या हो रहा है ना, आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि उस सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे मतलब इनपुट्स हैं जिससे आपका कस्टमर का फीडबैक, आपके कस्टमर का रिस्पॉन्स, आपकी कस्टमर की हिस्ट्री, आपकी कस्टमर की फीड्स, दे आर ऑल कलेक्टेड। एंड एक तो कलेक्शन हो रहा है, फिर उसकी एनालिसिस हो रही है, और उस एनालिसिस के बेसिस पर कस्टमर का सेगमेंटेशन हो रहा है। डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन को ये सॉफ्टवेयर डिसीजन मेकिंग करके दे रहा है कि दीज आर योर प्राइम कस्टमर्स, आपको इन पे फोकस करना चाहिए, इस कस्टमर का ये मतलब सेगमेंट है, दिस कस्टमर शुड बी डेल्ट लाइक दिस, ये कस्टमर ज्यादा आपका प्रोडक्ट्स इस टाइप का लेना पसंद करे। तो दिस वे अगर आप एक सॉफ्टवेयर लाइक सीआरएम रख लिए ना, तो आपकी पूरी क्या हो रही है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज हो रही है ना। सिमिलरली अगर आपने सॉफ्टवेयर जैसे कि ईआरपी जो हो गया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग अगर आपने रख लिया, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं उन सब की प्लानिंग ये सॉफ्टवेयर कर कर दे देता है। तो इसको कहते हैं, तो ये सारे, ये जो एग्जांपल हो गया सीआरएम, ये ईआरपी, ये सब क्या है, ये एक डेटा कलेक्शन सॉफ्टवेयर है जो क्या कर रहा है, डेटा को कलेक्ट कर रहा है, राइट। सो दीज आर द इंटरनल systems which collect the data. Then we have external also. External sources क्या होता है, external sources का मतलब होता है जैसे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या, सोशल मीडिया इज ऑल्सो कलेक्टिंग योर डेटा, है ना। आप किस टाइप का कंटेंट देख रहे हो, किस टाइप का आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, तो सो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय द सोशल मीडिया, बट दैट इज एन एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में क्या होता है कि थोड़ा सा डेटा इनएक्यूरेट हो सकता है, क्योंकि वहां पे देर इज अ लोड ऑफ डेटा, है ना। तो डेटा फिल्टरिंग एक बड़ा इश्यू हो जाता है एक्सटर्नल डेटा में, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स यूज करने में। और आईओटी, आईओटी डिवाइसेस का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब वो हर चीज, वो हर एक डिवाइस जो इंटरनेट यूज कर रहा है, लाइक आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका वेब पेज, मतलब वो हर एक डिवाइस जो जो आप जिसमें जिसमें आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, वहां वहां से आपका डेटा कलेक्ट होगा, ठीक है। जो जो वेबसाइट्स आप यूज कर रहे हो, जो भी इंटरनेट ऑफ थिंग है ना, तो वहां वहां से आपका डेटा कलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली द ऑर्गेनाइजेशन दे कलेक्ट द डेटा फ्रॉम ऑल दीज, है ना। तो आप देखोगे भी कि इफ यू आर सर्चिंग एनीथिंग ऑन वन ऑफ द वेबसाइट, यू विल बी गेटिंग द सजेशन ऑन अदर वेबसाइट आल्सो। If you are searching for one thing here, then you will be getting the suggestion on the Google also. So everywhere, wherever you are using IoT, you will be tracked there and your data will be collected, ठीक है। तो ये सब एक्सटर्नल सोर्स हो गया, ठीक है। फिर एक बार डेटा कलेक्शन का काम हो गया, तो डेटा स्टोर भी तो होगा। तो डेटा स्टोर के लिए आप लोग को पता ही है, नॉर्मल क्लाउड्स जो होता है, डेटा क्लाउड जो होता है, वो डेटा आपके डेटा को स्टोर करता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारा स्पेस है जो वास्ट वॉल्यूम ऑफ डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। फिर ये डेटा स्टोरेज के बाद क्या होता है, डेटा प्रोसेस होते हैं, है ना। तो ये लार्ज इतने सारे डेटा, जो आप मतलब सोचो कि आप जो सोशल मीडिया चला रहे हो या जो भी आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज करें, वहां हर एक जगह से अगर डेटा कलेक्ट हो रहा है, तो आप जस्ट इमेजिन करो कि आप इतने सारे कस्टमर्स हो और इतना सारा डेटा, और लाइक 24/7 यू आर जस्ट डूइंग सम और द अदर थिंग, यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग सम और द अदर थिंग, और वो सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है, वो सारा डेटा स्टोर हो रहा है। और इतना बड़ा डेटा स्टोर करके इतने बड़े डेटा को प्रोसेस करना या फिल्टर करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। यू एक्चुअली नीड पावरफुल डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क, है ना। आपको बिल्कुल बहुत पावरफुल डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा, जैसे अपाचे, हैंडूप, स्पार्क, ये सारे क्या है, डेटा प्रोसेसर है। ये सारे डेटा को फिल्टर करके देते हैं, ठीक है, कि आपके काम का, ऑर्गेनाइजेशन, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के काम का क्या डेटा है, ठीक है। तो उन सबको प्रोसेस करके देते हैं। उसके बाद इस प्रोसेस के बाद ना, फिल्टरिंग के बाद क्या होता है, डेटा की एनालिसिस होती है। एनालिसिस मींस why it is important for you and how it is important for you। उस डेटा को एनालाइज किया जाता है कि इस कंपनी के लिए ये डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है ना। ओके,
तो वो सब कुछ जो होता है वो कैसे होता है, वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के थ्रू होता है, मशीन लर्निंग एंड डेटा माइनिंग टेक्निक्स के थ्रू होता है। ओके, तो ये मशीन लर्निंग एंड डेटा माइनिंग टेक्निक्स जो होते हैं, ये सब क्या करते हैं कि आपको आपके जो कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स हैं उनको एक डायरेक्शन देते हैं, सो दैट सम लाइक डिसीजंस कैन बी मेड। ओके, अब एक बार डेटा एनालिसिस हो गई, फिर इन डेटा का विजुअलाइजेशन होता है। विजुअलाइजेशन से क्या होता है, विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको वो विजुअली देखकर समझ में आए। लाइक कोई डेटा अगर चार्ट में है, या कोई डेटा बार ग्राफ में, या कोई पाई चार्ट में है, तो आप जैसे देखते हो तो आपको समझ में आता है, अच्छा 47% जो है वो इससे, 67 है इससे, ये इससे, ये इससे। तो आपको वो विजुअल डेटा देखने के बाद यू आर बेटर एबल टू मेक अप द डिसीजंस, राइट। तो सिर्फ डेटा एनालिसिस से काम नहीं होता। डेटा एनालिसिस के बाद जब उसको आप विजुअली दिखाते हो ना, तो विजुअली दिखाने में क्या होता है कि ऑल द पर्सन हु आर नॉट इवन द एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड मेक अप द डिसीजन, है ना। तो डेटा एनालिसिस के भी बड़े सारे टूल्स होते हैं, लाइक टेबुलर इज देयर, पावर बीआई इज देयर। तो ये सारे जो टूल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं आपको पता है, ये डेटा को विजुअलाइज करते हैं। जैसे एक्सेल वगैरह में आप पाई चार्ट बनाते हो, बार डायग्राम बनाते हो, तो उससे क्या होता है आपको पता चलता है, अच्छा फीमेल्स आर मोर एक्टिव इन दिस, फीमेल्स आर मोर एक्टिव इन टीचिंग एंड मेल्स आर मोर एक्टिव इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, या फिर वट एवर वाइस वर्सा, वट एवर, है ना। तो ये आपको कैसे, एक नॉर्मल पर्सन को ये डेटा ज्यादा, डेटा एनालिसिस में क्या होता है कि सब कुछ फॉर्मूला वाइज लिखा है, आर स्क्वायर इज दिस, दिस इज दिस, द एरर टर्म इज दिस। The normal persons who are not expert in that, they may not understand the what is the meaning of r square. So if it is shown in some visual, they will be able to understand, and thus these are the tech tools जो कि आपका पावर बीआई में अगर आप सिर्फ डेटा एनालिटिक्स डाल दोगे ना, तो वो पता है क्या करते हैं, वो आपके लिए विजुअल बना कर दे देते हैं, ठीक है। Next is data governance and security. Data governance means all these data is your private data that need to be properly secured, right? Data privacy एक बहुत बड़ा issue है, and so the data governance and security, they need to be, the organization need to comply with the regulations, है ना, कि वो आपके डेटा को फालतू में कहीं यूज ना करे। Like you know the example, the case study of Facebook, where Facebook has to pay billions of dollars for this for sharing your data, because they, without taking your permission, they collected your data and they sold these data to the advertising companies and all, है ना। So this was illegal, and that's why this Facebook has to pay a good amount to the uh, okay. So application where it is applied and examples have shown. Okay. So that's it. This is an extended thing that you have to know the example. You can just discuss on how can decision making be improved, how can technology help. Okay. So all these things are given here. You can just go through it. Otherwise, then we are done with chapter number 1. Okay. So one thing we have not completed yet is the analytics techniques in supply chain management. I'll cover in the next slide. No problem. Okay, so till now the class is comfortable. Can I move to the next topic, please? Yes, ma'am. Okay, so see, okay, thank you. See, you may be feeling bored, but then we don't have any other option
right? Because we need to complete this. I'll just try to finish this as soon as possible so that we can have some fun with the MCQ questions. Okay, right? So, till now, just bear with that. So, big data we have already discussed the role of big data and the Zara case study. So, this has already been discussed. I'm not repeating again. I will be sharing these slides with you. So, this is, yeah, analytic techniques in SCM. I'm sharing the screen again. So, the next topic that we are discussing, still it is a part of chapter number 1 only, the analytics technique in supply chain management. So, we have discussed the methods that is applied. Okay, the methodology in supply chain means what methods can be applied. Like कोई इशू आया है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई मेथड अप्लाई करो या फिर थ्रू आउट द ईयर यू हैव तो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम एंड डेटा ड्रिवन. नाउ विल बी डिस्कसिंग एनालिटिक टेक्निक्स. क्या क्या है जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेटा एनालिटिक्स. तो क्या एनालिटिकल टेक्निक आप यूज करोगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए. तो so the first analytical technique is descriptive analytics. Yes. Nothing is visible. Nothing is visible. No. I've shared the screen. Let me check again. I'm stopping the share and will share again. Ab, it is visible. Yes. Yes, ma'am. Okay, all right. So इन डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स तो 3 तरह का एनालिटिक्स है. सबसे पहले आप नाम याद कर लो. डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. ये क्या है? ये एनालिटिकल टेक्निक है जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यूज होंगे. देन एंड देयर यूज होते हैं. मतलब कभी दे यूज डिस्क्रिप्टिव, कभी दे यूज प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव. ठीक है. तो डिस्क्रिप्टिव का नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि दैट इज लाइक डिस्क्रिप्टिव है ना. डिस्क्रिप्टिव मीन्स इट इज हिस्टोरिकली अवेलेबल. ठीक है. तो इसमें डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में क्या होता है ना कि ऑल द पास्ट परफॉर्मेंस डेटा इज बीइंग कलेक्टेड और पास्ट परफॉर्मेंस डेटा को एनालाइज किया जाता है. ठीक है. तो लाइक ऑल द पास्ट परफॉर्मेंस डेटा कि आपने कितना परचेज की, लाइक द कस्टमर्स परचेज, द कस्टमर फीडबैक, ऑल दिस थिंग, द पास्ट परफॉर्मेंस इज बीइंग कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड. ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है, पहले तो डेटा कलेक्शन टूल्स यूज होंगे. हमने अभी अभी डिस्कस किया है क्या क्या डेटा कलेक्शन टूल्स हैं. लाइक CRM, ERP, ऑल दीज थिंग्स. ये इंटरनल टूल्स थे और एक्सटर्नल क्या थे, सोशल मीडिया एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ठीक है. तो ये सारे सॉफ्टवेयर को यूज करके अपने क्या कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं. अब डेटा कलेक्ट हो गया, फिर क्या करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे. ठीक है. तो कौन से डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, वही वाले जो आपके पास्ट में कलेक्ट हुए थे, है ना, जो पास्ट परफॉर्मेंस आपका दिखाएंगे. जैसे कि अभी तक का आपका अगर मैं रिपोर्ट कार्ड कलेक्ट कर लूं तो क्या मुझे आपका पास्ट परफॉर्मेंस पता लग जाएगा. हाँ, मुझे आपका पास्ट परफॉर्मेंस पता लग जाए. तो मेरे पास टूल्स क्या है कि मैं आपका रिपोर्ट कार्ड जो है फ्रॉम क्लास UKG टिल दिस ग्रेजुएशन,
है ना, वो कलेक्ट कर लो। तो इसी तरह से सीआरपी या ईआरएम यूज करके आप पूरी डेटा का कलेक्शन करते हो और फिर इस पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हो। फिर मैं क्या करूंगी, आपके पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करके आपका चार्ट बनाऊंगी, है ना। तो क्या होता है कि सबसे पहले तो क्या होता है कि आप डेटा माइनिंग करते हो, मतलब पहले सारे डेटा कलेक्ट करोगे। फिर माइनिंग मतलब क्या होता है, यू आर कलेक्टिंग ऑल, है ना, एक एक करके डिग इन करके जो जो डेटा रिक्वायर्ड है सारा कलेक्ट करोगे, ठीक है। देन उसकी क्या करोगे, डैशबोर्ड, मतलब उसको आप प्रॉपरली आप शो करते हो, उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग करते हो, ठीक है। सिमिलरली लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दिया, रिटेल इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऐसे ही होता है कि फर्स्ट द डेटा इज बीइंग कलेक्टेड एंड दे आर शोन एंड देन दे आर रिपोर्टेड, ओके। तो डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ इतना है कि आप पास्ट परफॉर्मेंस के डेटा को, यू आर कलेक्टिंग द डेटा एंड एनालाइजिंग द डेटा यूजिंग सम ऑफ द टूल्स लाइक डेटा माइनिंग एंड ऑल, ओके। उसके बाद आ गया प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का मतलब क्या हुआ कि मीन्स यू आर फोरकास्टिंग द फ्यूचर इवेंट्स। अभी तक आप पास्ट परफॉर्मेंस के डेटा को कलेक्ट कर रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो कि यू आर फोरकास्टिंग द फ्यूचर इवेंट्स यूजिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड एल्गोरिदम्स, ठीक है। कुछ स्टैटिस्टिकल मॉडल और एल्गोरिदम लगाकर आप डेटा को फोरकास्ट कर रहे हो, और फिर पता है आप इसको क्या करोगे, आप इसको अप्लाई करोगे। कहाँ अप्लाई करोगे, डिमांड फोरकास्टिंग में अप्लाई करोगे, क्योंकि आप उस पास्ट परफॉर्मेंस डेटा से जो है, उस पास्ट परफॉर्मेंस, जैसे मैंने आपका प्रेप्स जो भी यूकेजी से लेकर और ग्रेजुएशन तक का डेटा लिया, उसमें डेटा माइनिंग की, फिर उसको डेटा मतलब एनालाइज किया, और उसके बाद एनालिसिस के बाद मुझे पता चला कि योर ग्राफ इज ग्रोइंग गोइंग हायर, मतलब मतलब आप जो है अब अच्छा से अच्छा परफॉर्म करते जा रहे हो, है ना। तो अब मैं क्या क्या फोरकास्ट करूंगी कि हो सकता है फ्यूचर में भी आपकी मार्क्स जो है इसी तरह से ग्रो करते रहे और इसी तरह से आप अपने लाइफ में एक्सेल करो, है ना। तो सिमिलरली इन द ऑर्गेनाइजेशन डिमांड फोरकास्टिंग इज बीइंग डन, कि अभी तक का तो सेल्स ऐसा रहा, अभी तक की तो डिमांड ऐसी रही है, अब आगे भी हो सकता है कि आपकी डिमांड सिमिलर पैटर्न पर चले, ओके। तो दिस प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स बेसिकली एप्लीकेशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, दे आर अप्लाइड इन डिमांड फोरकास्टिंग एंड आल्सो द रिस्क असेसमेंट, ठीक है। तो ये होता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। नेक्स्ट होता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में क्या होता है कि आप जो है कुछ एक्शन लेते हो, जैसे अभी आपने फोरकास्ट किया, डिमांड फोरकास्ट किया, अब आप डिमांड फोरकास्ट कर लिया आपने कि अब मुझे मेरे जो सेल्स होने वाले हैं, मान लो इतने टन सेल्स होने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या प्रोडक्शन हाउस को क्या करोगे, आप डिसीजन दोगे कि दिस मच रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, दिस मच फिनिश गुड्स हैज टू बी मेड विद इन दिस गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और इस लोकेशन पर सेंड होगा। तो ये सारा डिसीजन, जो एक्शन ले रहे हो ना, डिमांड फोरकास्टिंग के बाद जो एक्शन ले रहे हो ना, उसी को तो क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ठीक है। इसमें टेक्निक क्या यूज होता है, इसमें ऑप्टिमाइजेशन का टेक्निक होता है। ऑप्टिमाइजेशन मींस आप कोशिश करते हो कि आपके जो रिसोर्सेज लगे, आपका जो ये हो, वो ऑप्टिमाइज्ड हो, जो प्रोसेस हो वो ऑप्टिमाइज्ड हो, है ना। और आप इसमें साइमुलेशन मेथड लगाते हैं। साइमुलेशन मेथड, इफ यू नो, इज अ बिट सिमिलर टू दिस वन, क्या बोलते हैं, सिनेरियो एनालिसिस होता है साइमुलेशन मेथड में। आप क्या करते हो कि ये टूल्स एंड टेक्निक्स लगाकर आप डिसीजन लेते हो, ठीक है। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि आपका सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हुआ, जिसमें कि यू कलेक्टेड द पास्ट परफॉर्मेंस एंड देन यू ट्राइड गेटिंग सम ट्रेंड एंड पैटर्न, एंड
उस ट्रेंड एंड पैटर्न के बाद आप क्या करते हो, आपको जब पता चल गया कि ठीक है इट इज गोइंग दिस वे, या इसका डायरेक्शन ये है, फिर आप क्या करते हो, डिमांड फोरकास्ट करते हो, या फिर आप फोरकास्टिंग बेसिकली करते हो, जिसको क्या कहते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कहते हैं। तो प्रिडिक्ट करते हो आप कि फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट परफॉर्मेंस के डेटा से आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो। एक बार ये आपने प्रिडिक्ट कर लिया, फिर आप प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स लगाते हो, जिसमें आप एक्शंस लेते हो टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम। जो आउटकम आप चाहते हो उसके लिए आप एक्शंस लेते हो, और इसके लिए जो टेक्निक्स यूज होता है वो बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज होता है, या फिर साइमुलेशन मेथड। साइमुलेशन मेथड मतलब सिचुएशनल, या फिर आप कह सकते हो वो सिनेरियो एनालिसिस जो होती है ना, अगर इतना हुआ तो क्या, अगर इतना हुआ, मतलब आप यू ट्राई क्रिएटिंग सिनेरियोज ऑन योर लेवल। ओके, सो तो जैसे एग्जांपल आप ले लो, डायनेमिक रूटिंग इन लॉजिस्टिक। अगर आप लॉजिस्टिक्स की रूटिंग करते हो तो क्या करते हो, आप क्या करते हो, ढेर सारे सिनेरियोज क्रिएट करते हो। इफ आई यूज दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इफ आई यूज दिस रूट, देन व्हाट विल बी द charges, what will be the cost, what will be the fuel, what will the distance, what will be the time, and what will be the difficulties. Okay, similarly if I use this route, then all the parameters are checked. ठीक है, तो डायनेमिक रूटिंग में बेसिकली प्रिस्क्रिप्टिव यूज होता है। ठीक है, डायनेमिक रूटिंग मतलब जब आप रूटिंग कर रहे हो तो हर तरह के रूट्स को ट्राई करते हो, सिनेरियोज क्रिएट करके देखते हो, है ना। अच्छा, देन इट इज टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एनालिटिक्स इन सप्लाई चेन। अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अगर ये सब यूज करोगे ना, डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव, तो पता है क्या होगा। ओके, तो व्हाट मतलब उसमें आपकी चैलेंजेस क्या होंगे, या फिर आपका कैसे कैसे आपको करना है, कैसे डिस्क्रिप्टिव लगाना है, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, ये सारा डिस्कशन है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्यूचर ट्रेंड्स इन सप्लाई चेन एनालिटिक्स। फ्यूचर ट्रेंड क्या है, वही आपको पता ही, ये एआई इज ऑन डिमांड, एआई एंड मशीन लर्निंग, द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रियल टाइम एनालिटिक्स एंड प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इन डिसीजन मेकिंग। ओके, so this is done. So here our target was to just have an understanding about these analytical techniques of supply chain management. Comfortable class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now next we have to discuss on unit number 1 is done. Unit number 2 we will be discussing analytics in demand planning, capturing data driven from different sources, and demand prediction model. Chapter number 2. Chapter number 2 I'm not getting. Unit 2. Unit 2, I guess, was there in the first PPT itself. The first PDF we have said.
Analytics and demand planning and capturing demand data from different sources, demand prediction model and price optimization. So let's take a break of 5 minutes. I'm trying to find out unit number 2. I guess unit 2 ना किसी या तो unit 3 और 4 में कहीं merge हो गया है. तो I'll just start with unit 3. ठीक है, unit 3, 4, 5. If I'll not get अगर मिल गया इसमें तो ठीक है, otherwise then वो delete हो गया. I'll just have to prepare again. Okay, unit number 2. So unit number 3, analytics and sourcing, I can see, but unit number this one, 2, analytics and demand planning. I'll have to check again. No problem. मैं एक बार check करती हूँ, मिला तो good. Otherwise then I'll just share a new slide for you. Okay. Prepare the new slide and share that with you. So now it's 12:42. We can just meet at 12:50. Okay. Take a break of 5 minutes. You can drink water and then we'll be meeting in 5 minutes. Okay.
Welcome back, class. We are starting with this unit, chapter 3, 3, 4, 5, 6. I'll be going in chapter 1, chapter 2. Some of the topics you'll be getting is covered in those only. Okay. Okay, ma'am. Yeah. So, we'll be discussing with analytics and sourcing and procurement. So, I'm sharing the screen again here. Is it that the screen is shared? No, ma'am. No, ma'am. No, You're ma'am. not, It's not not yet. visible. Okay. 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 It is visible, right? Yes, ma'am. Yes. Okay. Thank you. So, yeah. Analytics and sourcing and procurement. Here will be the our main purpose will be discussing कि क्या किया जाए, जो बनाना है, जो आपको रॉ मटेरियल बनाना है या जो फर्स्ट स्टेज ऑफ आपकी पार्टीज हैं उनसे आप खरीदना चाहते हो या आप खुद अपना इन हाउस बिल्ड करना चाहते हो. ठीक है, इन हाउस या आउटसोर्सिंग का डिस्कशन करेंगे कि व्हाट ऑल हैज टू बी आउटसोर्स एंड व्हाट ऑल हैज टू बी इनसोर्स्ड. ओके. सो इन हाउसिंग इट बेसिकली So in-house basically it involves internal management, sourcing and procurement process. It provides in-house करने का फायदा. In-house मतलब आप क्या कर रहे हो कि आप खुद ही वो डिपार्टमेंट सेट कर रहे हो, आप खुद ही बना रहे हो. ठीक है, या खुद ही उस काम में इन्वॉल्व हो. ठीक है. तो आपको इन हाउस का फायदा ये होता है कि आपको बाहर कहीं पे किसी भी सप्लायर पर रिलायबल नहीं होना है. ठीक है, आपको किसी भी सप्लायर को पेव नहीं करना है. आपको अपने जो कंट्रोल्स हैं या अपना जो प्रोजेक्ट है वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना है. राइट. आपको आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होगी. आपके जो डेटास जो भी थे वो सेव रहेंगे कि हाँ भाई आप क्या सेल करने जा रहे हो, आप आपका कब लॉन्च होगा, या कोई भी डेटा आपको शेयर करने की किसी भी एक्सटर्नल पार्टी से जरूरत नहीं पड़ती है. तो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी या सेंसिटिविटी ऑफ डेटा जो रहता है वो मेंटेन रहता है. हाउएवर प्रॉब्लम क्या है कि इट रिक्वायर सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इन व्हाट? इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी. आपके पास वो टेक्नोलॉजी होना चाहिए, वो ह्यूमन रिसोर्सेज होने चाहिए और वो इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, वो सारे डेटा एनालिटिक्स के टूल्स होने चाहिए. बिकॉज यू नो टेबुला एंड ऑल दीज मेनी ऑफ देम आर फ्री, बट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन लेवल आप देखोगे ना तो जनरली वो हाई पेड प्राइस के होते हैं. ठीक है. However, आउटसोर्सिंग में क्या है कि आउटसोर्सिंग क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स हायरिंग एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स, है ना, कि आप किसी एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर को हायर करते हो. ठीक है. और उसके बाद क्या करते हो उसमें, लेकिन फायदा ये है कि आपको एक एक्सटर्नल स्पेशलाइज जो रहता है एक्सपर्ट मिल जाता है ना, हु हैज एक्सपर्टीज इन डूइंग दैट. ओके. देन कॉस्ट सेविंग भी हो जाती है. बिकॉज अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हो तो आपको इंफ्रा एंड ह्यूमन रिसोर्स और ये सब लगाना पड़ता है, तो कॉस्ट सेविंग हो जाती है. और फ्लेक्सिबल होता है. फ्लेक्सिबल इन द सेंस ना कि अगर अगर इन एनी केस इफ यू हैव टू ड्रॉप दैट प्रोजेक्ट, अगर आपको वो प्रोजेक्ट ड्रॉप करना है तो आप क्या करोगे? सिर्फ जाकर सप्लायर को मना कर दोगे और उसके जो भी कंपेंसेटिंग वैल्यू होते होंगे वो पे कर दोगे, काम खत्म. लेकिन अगर आप लेकिन अगर आप उसको इन हाउस बनाते ना तो आपने क्या किया था? आपने इंफ्रा बिठाया, आपने ह्यूमन रिसोर्स अपॉइंट किया और सब कुछ किया, और उसके बाद किसी भी वजह से वो प्रोजेक्ट या तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से या फिर वो जो आपको डिलीवरी देनी थी वो ही ड्रॉप आउट हो गया, तो किसी भी वजह से अगर आपको वो प्रोजेक्ट ड्रॉप करना पड़ रहा है तो देयर विल बी ह्यूज लॉस इफ यू आर डूइंग इट इन हाउस. तो आउटसोर्सिंग में ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी होती है.
है ना। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आपका जो डायरेक्ट कंट्रोल था, है ना, कि आपने कोई डेटा शेयर नहीं करना था, वो चीज, वो कंट्रोल खत्म हो जाती है। नाउ यू हैव टू, एक्चुअली यू हैव टू शेयर ऑफ द डेटा विच इज रिक्वायर्ड, है ना। तो आपको वो डेटा या वो जो कंट्रोल थी कि आप जैसे पर्टिकुलरली अपना प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो, है ना। तो इस तरह से आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर आपका जो डायरेक्ट कंट्रोल रहता है वो लूज होता है। तो दोनों को इफ अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों के सम ऑफ द प्रोज है एंड कुछ कॉन्स है, ठीक है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इन बोर्ड। अगर आप लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन इन बाउंड, मतलब आप अपना लॉजिस्टिक और अपना ट्रांसपोर्टेशन यूज करोगे तो क्या है, सबसे पहले सर्विस लेवल का आप डिस्कशन करो। तो अगर आपके पास एफिशिएंट इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन है तो उससे क्या होता है कि आप टाइमली डिलीवरी दे सकते हो, आपका कोई प्रोडक्शन डिले नहीं होगा, क्योंकि आप अपने आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई थर्ड पार्टी पे आप डिपेंडेंट नहीं हो कि वो आपको देगा नहीं देगा, है ना, आप अपना खुद से कर रहे हो। तो अगर आपके पास खुद की इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है तो आप टाइमली डिलीवरी दे सकते हो, कोई डिले नहीं होगा, हाई सर्विस लेवल होगा, और इससे क्या होता है कि डायरेक्टली आपके सप्लाई चेन को इम्पैक्ट होता है, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होता है। अगर आप आपको पता है इनबाउंड लॉजिस्टिक कितनी इंपॉर्टेंट है। इनबाउंड लॉजिस्टिक से क्या प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर आप इनबाउंड मतलब आप अंदर अपना खुद का लॉजिस्टिक यूज कर रहे हो तो एक तो कॉस्ट का फर्क आ जाता है, ठीक है। दूसरा, इन्वेंट्री लेवल बेटर मैनेज होगा, क्योंकि यू बेटर नो कि आपने कितना इन्वेंट्री बनाया हुआ और कितना इन्वेंट्री इज लाइक ऑन ऑर्डर एंड कितना इन्वेंट्री इज एज पर द दिस वन मीन्स कितना आपकी सेफ्टी इन्वेंट्री है ना। और यू बेटर नो योर दीज डेटाज, राइट। तो ये सारा फायदा हो जाता है कि आप बेटर मैनेज कर सकते हो और टाइमली प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। और कॉस्ट इम्प्लीकेशन, मतलब अगर आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक अगर इनएफिशिएंट है तो फिर आपको कॉस्ट बियर करना पड़ सकता है। लाइक अगर आप कोई डील मीट नहीं कर पाओ या कोई डेडलाइन मीट नहीं कर पाओ, या फिर अगर आपके पास प्रॉपर लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, या फिर है भी तो आप प्रॉपरली उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे हो, आप रूटिंग नहीं कर पा रहे हो, तो इन सारे केसेस में आपको कॉस्ट बियर करना पड़ सकता है। तो ये सारे इश्यूज बोल लो या ये सारे आप प्रॉस बोल लो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि यू कैन जस्ट डिसाइड ऑन कि वेदर यू हैव टू टेक ऑन इनबाउंड लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन और you want to go for the outbound logistics. Okay, so you know Flipkart and all this, they use their inbound logistics also, they use external outbound logistics also. तो एक बार आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो जो जो जिस जिस पॉइंट पर हमें बात करना वो है सर्विस लेवल, मतलब सर्विस आप कैसा दे पाओगे अगर आप इनवॉइस इनबाउंड यूज करोगे, तो आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से क्या क्या आप बेटर कर सकते हो, है ना। और क्या क्या चैलेंजेस को आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, और क्या इसके कॉस्ट इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग ऑन सप्लाई चेन कॉन्ट्रैक्ट। सप्लाई चेन कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो आप सप्लायर से अगर आप आउटबाउंड करते हो तो आउटसोर्सिंग करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा। उस अग्रीमेंट में आप सप्लायर्स के साथ टर्म्स लिखते हो, कंडीशंस लिखते हो, कितने आपके मतलब सारे लीगल पेपर्स आप उसमें रेडी करते हो, सारी फाइनेंशियल consequences लाते हो कि in case if it is not, if the supplier is not able to provide you with the delivery, then what will be the consequences। तो इस टाइप के जितने भी रिलेटेड रिस्क रहते हैं ये सारे को लीगल एस्पेक्ट से, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से और ऑपरेशनल एस्पेक्ट से कवर करते हो और राइट डाउन करते हो टू अवॉइड ऑल दिस रिस्क, है ना, एंड इंश्योर दैट इट इज कंप्लाइड एंड इट लीड्स टू द स्मूथ ऑपरेशन, है ना। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो जिसमें सब कुछ लिखते हो रिलेटेड टू लीगल। लीगल में आप लिखोगे कि अगर 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 if this supply is not able to meet up with the demand, then what will be the consequences, what will be the responsibilities, how can it be how can the dispute be resolved। तो ये सारी की क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है लीगल पेपर्स में उसमें आपका आता है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्लीकेशन भी लिखते हो, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बिकॉज यू नो when you are asking for any order from a supplier, you actually have to deliver that order to the ultimate customers, and because of any delay from the supplier side, if you are not able to deliver to the consumer at the proper time, then you get a bad reputation, है ना। तो इसकी वजह से आपको मतलब बहुत सारा आपको
बैड रेपुटेशन, लॉसेस, बहुत सारे कस्टमर आपके जो है स्विच कर सकते हैं। तो इन सारे केसेस में लीगल एस्पेक्ट क्या होगा, मतलब आप सप्लायर्स पर लीगली चार्ज कर सकते हो, या सप्लायर लीगली रिस्पॉन्सिबल या लीगली सीओ हो सकता है कि नहीं। तो ये सारा चीज आप क्लियरली जो है अपने सप्लाई चेन कॉन्ट्रैक्ट जो बनाते हो उसमें आप डालते हो, ठीक है। तो उसमें मेंशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड एनी risk or avoid any liability and ensure that accountability is being maintained, supplier accountable हो, responsible हो और enforceable हो, ठीक है। On both of the sides it is like the legal aspect is done on both of the side, means if you cancel the order and the supplier has like halfway prepared with the order, तो उस केस में आप पर क्या क्या charges हो सकते हैं, that is also mentioned, ठीक है। तो all the legal aspects are being mentioned in the contract. Then is the financial implication. Financial implication का मतलब है कि what is the financial challenges or the financial consequences अगर आप मीट नहीं करोगे या फिर आप डिलीवरी नहीं दे रहे हो, तो उस केस में आपको क्या क्या कंपेंसेशन देना होगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉन्ट्रैक्ट लाइक द फाइनेंशियल फ्लो, द कैश मैनेजमेंट विद इन द सप्लाई चेन, द फाइनेंशियल अग्रीमेंट, these all are being mentioned there so as to optimize the or to mitigate the risk, okay। सो दिस इज ऑल अबाउट द सप्लाई चेन कॉन्ट्रैक्ट दैट यू हैव टू स्टडी। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो बेसिकली है कि एवरीथिंग हैज टू बी प्रॉपरली मेंशन रिलेटेड टू लीगल, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल, ठीक है। तो लीगल एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल एस्पेक्ट और ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स आपको सब कुछ कवर करना है। नेक्स्ट इज द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मीन्स आप जो रिस्क है, जैसे हमने इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट वी डिस्कस्ड कि हाउ व्हाट आर द प्रोबेबल रिस्क। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया सबसे बड़ा रिस्क है रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लायर, है ना। सप्लायर रिलायबल है या नहीं है ना। द मार्केट इज वेरी डायनेमिक, दिस इज अनदर रिस्क, है ना। मार्केट जो है वो बहुत ही डायनेमिक है, और मार्केट जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल सोर्सेज या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी अफेक्टेड होते हैं। तो ये सारा रिस्क था, है ना। तो इस रिस्क को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। तो इस रिस्क को इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी हैव डिस्कस कि आपको क्या करना चाहिए कि यू शुड मेक कोलैबोरेशन विद, यू शुड यूज सम strategies like quick response strategies, postponement strategies and all these tailor sourcing strategies and all these. Now we'll be discussing कि इस strategy में आप क्या हो कि आप data analytics use करो और फिर इस risk को mitigate करो। तो द फर्स्ट थिंग इज रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। तो आप जो स्ट्रेटेजी बनाओगे रिस्क मिटिगेशन के लिए, तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द रिस्क। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि रिस्क कहाँ कहाँ आ सकता है। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि पहला जो रिस्क है वो रिलेटेड टू दिस वन रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लायर, कि सप्लायर रिलायबल इनफ नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे कि सप्लायर्स का क्या करोगे, हिस्ट्री निकालोगे, उनका डेटा कलेक्ट करोगे करोगे उसके बाद स्टडी करोगे, and then you will pick up the suppliers and you will remove those suppliers from the list who are not coming up to the benchmark, right। तो जो आपके benchmark तक आ रहे हैं, जिनकी reliability check आप कर रहे हो और उनका reliability मतलब आपका जो भी benchmark set था वहां तक आ रहा है, आप उनको select करोगे। then you will like this you will बी फर्दर डूइंग द रिसर्च। तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कौन सा रिस्क है, फिर उसके बाद उस रिस्क को एड्रेस कर रहे हो। all the risk related to the sourcing, related to the procurement, related to the logistic and the supply chain contract। mainly तो यही होता है, sourcing मतलब related to supply chain, ये related to the supplier, procurement means related to the डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लॉजिस्टिक, और सिर्फ और फिर जो है वो सप्लाई चेन कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे रिस्क रहता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपरली मेंशन नहीं करते हो द कंसिक्वेंसेस एंड द लीगल एस्पेक्ट, तो क्या हो सकता है कि इन टाइम वेयर द सप्लाई इज नॉट एबल टू मीट अप विथ योर डिमांड, देन आप उस पर लीगल स्यू भी नहीं कर सकते हो बिकॉज योर कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट मेंशनिंग ऑल दोस पॉइंट्स, ठीक है। तो दिस इज द रिस्क। तो इसको आप क्या, इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए यू हैव टू मेक सम स्ट्रेटेजीज, ठीक है। स्ट्रेटेजी सच एज, पहला स्ट्रेटेजी हम लोगों ने डिस्कस कल भी किया था कि वी शुड डाइवर्सिफाई द सप्लायर्स, ओके। सो तो आपको अपने सप्लाई वन पर्टिकुलर सप्लायर पर रिलायबल नहीं होना है, आपको सप्लायर्स जो है वो डाइवर्सिफाई करने हैं, है ना।
आपको रोबस्ट कंटीजेंसी प्लानिंग करनी है। कंटीजेंसी प्लानिंग वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए, हमारे पास हमेशा एक सब्स्टिट्यूट सप्लायर्स होने चाहिए, जो की सप्लायर्स हैं उनके लिए हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट सप्लायर्स होने चाहिए। एंड वी शुड हैव अ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, है ना, कि हाउ दीज सप्लायर्स आर परफॉर्मिंग एंड हाउ दे आर लाइक प्रोवाइडिंग द डिलीवरी और नॉट। ओके, so this way, and in this like in preparing the contract, in preparing the list of the suppliers and all these things, we should use data analytics, because the you need to collect the real time data, you need to collect a reliable data basically. Okay, and then you have to do a rigorous study on that, and suppliers. Okay, एंड सिमिलरली जब आप कंटीजेंसी प्लान करोगे तो भी आपको क्या करना चाहिए, सिनेरियो एनालिसिस करनी चाहिए कि इन केस अगर ईरान में अटैक हो गया या ईरान में वॉर चल रहा है तो फिर क्या तो फिर व्हाट यू शुड डू इज यू शुड लीव ऑल द दिस वन पैसिफिक कंट्रीज, और यू शुड लाइक या फिर किसी एशियन कंपनी कंट्री को आपको पार्टनर रखना चाहिए या फिर सप्लायर रखना चाहिए या फिर उसी एरिया के नियर बाय रखना चाहिए। सो ऑल दिस कंटीजेंसी ऑल दिस सिनेरियो एनालिसिस शुड बी डन टू हैव द प्रॉपर रोबस्ट कंटीजेंसी प्लानिंग। ओके, दूसरा हो गया, एक तो हो गया आपको रिस्क मिटिगेशन की स्ट्रेटेजीज पहले से रेडी रखनी है, दूसरा हो गया कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मींस यू शुड कंटिन्यूअसली लाइक आप जो डेटा ड्रिवन अगर यूज कर रहे हो अपने सप्लाई चेन में, तो आपको कंटिन्यूअस पता चलेगा कि शायद इस सप्लायर को आपको ड्रॉप आउट कर देना चाहिए, या फिर इससे बेटर प्रोसेस क्या हो सकता है, या फिर इससे बेटर मतलब सप्लायर्स क्या हो सकते हैं ना। तो you should continuously improve, you should continuously work on improving the risk mitigation to adapt to the changing of the to adapt to the market, to adapt to the dynamics of the market. Okay, and also mitigate any upcoming risk. Next is the supply chain reliance. Supply chain reliance is the same as supply chain reliability. So what you are doing is you have to build on some resilience in supply chain विच अलाउ फॉर प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर कोई भी इशू आ रहा है आपकी की सप्लायर के साथ, तो आपको प्रोएक्टिवली पता होना चाहिए, इससे पहले कि वो सप्लायर पूरा डिनाई कर जाए या आपकी पूरी डिलीवरी डेट डेडलाइन पर आ जाए, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट नेक्स्ट कैन बी डन, है ना, क्या वल्नरेबिलिटीज है या फिर क्या मिटिगेशन प्लान हम कर सकते हैं कि एटलीस्ट द ऑर्डर कैन नॉट बी मिस्ड आउट। ओके, द डिलीवरी कैन बी डन within the time. So in order to mitigate this risk, you should always be ready with the agile strategies. You should be ready for any unforeseen event and you should build up some resilience. ठीक है, तो आपको एक रेजिलेंस, एक बैकबोन तो क्रिएट कर कर रखना चाहिए सप्लाई चेन में। ओके, तो इस तरह से यू कैन मीट अप विद द रिस्क। ओके, next is technological integration. Technology integration means how can you integrate technology in all these that we have just now discussed. That means how can you integrate this technology in building a resilience supply chain. How can you build put on technology in having a risk mitigation strategies. So here you just see रोल ऑफ एनालिटिक्स। सो यू नो एनालिटिक्स इट कैन ऑप्टिमाइज द सोर्सिंग। अगर आप एनालिटिक्स यूज करोगे ना तो आप सोर्सिंग ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सोर्सिंग का मतलब आप बेस्ट सप्लायर्स चूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है देयर आर सॉफ्टवेयर एंड टूल्स जो कि अगर आप यूज करोगे ना तो दे विल एनालाइज ऑल योर की सप्लायर, सारे की सप्लायर का डेटा कलेक्ट करेगा वो सॉफ्टवेयर, एनालाइज करेगा और फिर आपको बताएगा कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट दीज आर द सप्लायर्स हु यू कैन who you can make the partner or collab with. Okay, so these all services are being, these all can be optimized with the help of analytics. आपको procurement में optimization दे सकता है, operation में दे सकता है. So you know it, this data driven, it enables in decision making, in giving you the predictive insights. मतलब पहले से beforehand वो forecasting करके बता सकता है कि there might be some issue with this supplier or this one, है ना. And the process automation also,
this the using of this one technology, they can also automate the process, and that will lead to efficiency along with the cost reduction. ठीक है, तो this way the data analytics is so very useful. So digital technology, if you are using AI or IoT or blockchain, so these are, these are just revolutionize the supply chain management. It help, it now help in giving so much visibility, traceability, the trackability, the collaboration, all these are possible because of this. Okay, not only this, you can also increase the efficiency, the operational efficiency can be increased. So the technology basically क्या हो सकता है ना, कि आप क्या होगा कि अगर आप ये सारे डेटा एनालिटिक्स और टूल्स यूज करोगे, तो क्या होगा ना कि आपका प्रोसेस ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड हो जाएगा, मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा ना कि आप रियल टाइम मॉनिटर कर पाओगे कि इशू कहाँ आ रहा है। अगर एक भी डिलीवरी मिस आउट होती है, तो एट द रियल टाइम आप ट्रैक कर पाओगे कि क्या ये इशू लॉजिस्टिक में हुआ है, क्या ये इशू इन्वेंट्री पे हुआ है, या क्या ये इशू सप्लायर की वजह से हुआ है। तो यू विल बी एबल टू मॉनिटर दिस रियल टाइम, एंड दिस एम्पावर्स यू द एज अ ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू द डायनेमिक मार्केट डिमांड एंड ड्राइव कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो इसी वजह से आप क्या होगा कि आप ट्रैक कर पाओगे कि इशू कहाँ हो रहा है, और आपको इस मार्केट को कैसे मीट करना है, और आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर पाओगे। ठीक है, so this was all about the chapter number 3. So chapter number 3, the important thing is you have to discuss on the in-house or outsourcing. You have to discuss on the mm, the if you are using in-house, then what are the issues you have to keep in mind. Then we have to discuss on the supply chain contracts, how the contracts is being made. Then we need to discuss on how the risk can be managed, and how can the technology be integrated in the this supply chain, so as to help you in uh, having the this cost saving also, this improvement also, and in order to adapt to the dynamic market also, dynamic market demand also. Okay, so this is chapter number 3. Yes, we'll be discussing the questions also, which type of questions we can get in exam. So once we are done with all the units, we'll be discussing on the questions you may get in your exam, the type of questions, or the case studies, and then we'll be discussing the MCQs as well. Done? Comfortable class with the this topic, supply chain contracts, unit number 3? Yes, Yes, ma'am. no? Okay, thank you. So, okay. Now we'll be discussing unit 4.
Screen is visible? No, ma'am. Not visible? No, ma'am. Visible, ma'am. Visible. Visible. I've shared again. Yes, ma'am. Visible. Visible. ठीक है. Thank you. So see, the next unit discusses on analytics and sales and operation planning. So we have discussed the sourcing. Now we are into sales and operation. That is making. है ना? Okay. So in this slide here, the discussion is all about so the discussion is all about to sell and how to make the product. Okay, so how can analytics be used in this? So the first thing is tailored service level. That means you can provide the tailored service. We have discussed this in the class that these companies like this one, the Ferns and Petals and all these, they are able to provide you the tailored made service. So how the tailored made service is being provided is like the specific product and the customer, they are provided with some option to tailor made their choice. Okay, so in order to basically meet the diverse, the dynamic market consumers, the organizations are nowadays, what they are doing is they are providing a service which is known as tailoring service. Okay, so earlier this was not very used to thing, but nowadays, in order to give the customers utmost satisfaction and to also charge a premium or to provide the one on one feeling or one on one service to the consumers, and to gain the trust and loyalty of the customers, what the organizations are doing is they are providing a new type of service that is known as tailored service levels. Okay, so uh, here what they do is they provide the tailoring service in order to like firstly to meet the market demand and also to optimize the resources. Okay, so their approach is firstly to enhance the customer satisfaction, to foster loyalty, and also open opportunities for the premium pricing and cross selling. So we discussed that in Ferns and Petals also, in Amazon also, you get the facility of the premium prime service where you get an opportunity to choose if you want to like get the delivery within 2 hours, within 4 hours, or whatever slot you can choose. So this is nothing but a tailor made service जो सिर्फ आपको दी जा रही है. It is not provided to all the customer. It is only provided to the customers who are choosing those, and for this you are charged a certain price also. Also there are facilities to add a card, to add a gift wrap and all these things, है ना. ये सारा जो छोटा मोटा सर्विस जो एट द एंड प्रोवाइड किया जाता है ना, विच डज नॉट चेंजेस द कोर ऑफ द प्रोडक्ट बट देन विच एड्स सेटिस्फैक्शन, है ना. वो कोर ऑफ द प्रोडक्ट तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसकी रैपिंग चेंज कर देना या उसकी किसी कार्ड में डालना जिसमें पर्सनलाइज नेम और पर्सनलाइज आपका मैसेज, वॉट एवर यू आर टाइपिंग और वॉट एवर यू आर गिविंग इज बीइंग सेंड देयर, दैट एड्स वैल्यू टू द कस्टमर. ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज भी आजकल ऐड हो गए हैं जिसको कहते हैं टेलर्ड सर्विस लेवल. ठीक है, तो these are services which are being nowadays provided to the customers in order to make them more satisfied, है ना. और इससे क्या होता है ना कि हर टाइप ऑफ कस्टमर्स जो है दे आर into that
like the organization. Okay, next is impact on planning. Impact on planning means if you are providing this service, the differentiated or you can say the tailored service level, तो accordingly आप अगर 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 आप जैसे कि if you are selling sorry, if you are ordering something from Amazon or this one, तो अगर आपको tailored service मिली हुई है where you can add a gift wrap, है ना, अगर आप गिफ्ट रैप उसमें ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो, और यू कैन ऐड फ्लावर और यू कैन ऐड अ कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड एंड पुट अ मैसेज देयर। तो आपको अगर आप ये कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली the organization have to manage that, have to manage their inventory accordingly, है ना, कि आपको गिफ्ट रैप वाला भेजना है तो accordingly these tailored services, these accordingly influence the inventory management also. डिमांड फोरकास्टिंग भी उसी हिसाब से करनी होती है एंड प्रोडक्शन शेड्यूलिंग भी उसी हिसाब से करनी होती है, क्योंकि एट द एंड लाइक देयर आर लाइक एक प्रोडक्ट आता है जिसमें टी शर्ट्स पर देयर आर सम नेम्स और समथिंग लाइक दैट इज रिटन और अ पिक्चर इज बीइंग पेस्टेड देयर, आप अपना पिक्चर पेस्ट करा सकते हो, है ना, अपने फ्रेंड का पिक्चर पेस्ट करा सकते हो, कुशंस ऑन विच द पोस्टर्स आर बीइंग मेड, तो वो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हो गए, इन सारे प्रोडक्ट्स में यू नो दैट it has to be like after the order it has to be produced, like it has to be printed and then the scheduled for the delivery, है ना, and you know that these are also being delivered in a day. How these are possible? These are possible because the organizations are so well, they are using the data analytics ki ye fatafat this information is being shared to the production department that this need to be produced and this need to be printed, and thereafter it is being shared to the inventory management to manage those, and then the production scheduling is being done. So effective analysis of these levels, it is vital to have an effective, तो ये कैसे possible है, ये predictive analytics और ये सारे के through possible है, तो effective analysis is required for this, then only the demand and supply can be met here, and also minimize the stock out, है ना, कभी ये situation ना आए कि stock out वाला हो, and adapting to the dynamic market shift also, the organization now need to adapt to the market shift. Okay, the dynamic market shift. Okay, next is I'm sorry, so next is operational efficiency. So you know, by strategically aligning the service level with the value proposition of product, है ना, and also the preferences of the customer segments, so organization what they can do is they can streamline the operations, the operation can also be streamlined, just like now just now I told you that the if you are ordering for a printed t-shirt, then that has to be streamlined with the operation, okay, in order to reduce any waste, and also these has to be streamlined to all other parties, right, so that the organization neither they run out of the stock nor they have or also they are able to meet the scheduled time. Okay, so differentiated service level is one such service level which are now being which is now in fashion with the organization. The organizations are you with the help of data analytics, they are providing, they are able to provide these services. Okay, सो इसका जो ये सर्विस जो प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है, इसका इम्पैक्ट प्लानिंग पर भी है, इसका इम्पैक्ट ऑपरेशंस पर भी है. ओके, so all these are being affected and all these have to be streamlined properly. Okay, next the discussion is on the location of the plant. We have discussed that the location of the plant is also very important because it is directly influencing the cost एंड द डिलीवरी टाइम, है ना, अगर ज्यादा दूर आप सप्लायर से ज्यादा दूर रखोगे तो फिर आपको रॉ मटेरियल लाने में टाइम लगेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, अगर आप कस्टमर से ज्यादा दूर रखोगे तो डिलीवरी टाइम बढ़ेगा और कॉस्ट बढ़ेगा और लॉजिस्टिक का कॉस्ट बढ़ेगा, है ना, तो
इसलिए लोकेशन ऑफ प्लांट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ लोकेट कर रहे हो, जहाँ लोकेट कर रहे हो उसकी वहाँ की ज्योग्राफी क्या है, आप ज्योग्राफिकल स्टडी करते हो, वहाँ पर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि नहीं, है ना, वहाँ पर लीड टाइम आपका क्या लगेगा, वहाँ लेबर अवेलेबल है कि नहीं, लेबर किस रेट पर, लेबर एट अ कॉम्पिटिटिव रेट पर, है ना, वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, वहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसी है ना, वहां पे पॉपुलेशन कैसा है जिसको आपको सर्विस देना है ना। तो ऑल दीज things are very important for the decision of the location of plant. We have discussed that how the GIS is being used by the Amazon, है ना, to get the location of the plant, है ना। तो first thing मतलब what are the 3 or 4 points that we can discuss on while discussing the location। तो लोकेशन ऑफ प्लांट्स का आपको जब देखना है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, रिस्क एंड ट्रेड ऑफ। ओके, सो you have to see the geopolitical stability। geopolitical stability मतलब वहां पर कोई politically अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, कोई भी जगह, कोई भी ऐसी जगह, आपको पता है कि कोई भी, लेट इट बी कंट्री, रीजन और अ डिस्ट्रिक्ट, इफ इट इज पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड, अगर कोई कंट्री भी पॉलिटिकली डिस्टर्ब नहीं है, जहां पे गवर्नमेंट, लाइक पाकिस्तान, वहां पे गवर्नमेंट मतलब कोई भी ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं होते जो 5 साल टिक जाते हैं ना, तो देर इज अनस्टेबिलिटी, तो वहां पर कोई भी आपका आप प्लान बिठाओगे या कुछ करोगे तो देर विल, यू विल ऑल्सो बी डिस्टर्ब, क्योंकि वहां पर जियो पॉलिटिकल इश्यूज हमेशा रहेगा, है ना। तो यू शुड चूज सम लोकेशन विच इज पॉलिटिकली स्टेबल। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपको देखना चाहिए कि वहां पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस कैसे हैं, ठीक है, and all these things, ठीक है, have to be taken care। so you have to balance the cost and risk, okay, while they taking the this strategic decision। okay, next is strategic consideration। that means आपको, you have to just check on with the cost structure, you have to check the lead time, you have to check the distribution efficiencies, and by analyzing the market proximity। I have already discussed market proximity का मतलब मार्केट से वो कितनी दूरी पर है, ठीक है, मार्केट से वो लाइक रीजनेबल डिस्टेंस पर है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, लेबर अवेलेबिलिटी है, ये सारे अगर अवेलेबल है, that means that you can optimize the logistic and also mitigate the operational risk, है ना। next is implications for planning। that means geographical placement of the plants मीन्स आपको जो प्लांट जो लगाना है ना, उसको आप ज्योग्राफिकल प्लेसमेंट करके देखो रिगार्डिंग द सोर्सिंग, प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ओके, एंड देन you should use analytics to determine the optimal plant location which can enhance the responsiveness, can reduce the lead time and enable effective sales and operational synchronization। okay, so this is all the things that you have to check on before locating a plant, before placing your plant। okay, next is product line mix। product line mix, if you remember, we have discussed that what all products, like there are some core product for each company, there is some core product, है ना, and there is some complementary product that are being made by those companies, those organizations। like for example, I remember that we discussed on the Apple case study where the Apple iPhone is the core product of Apple, along with that it comes with the iPod and all these things। so those are the uh, those are not the core product, right? The core product is iPhone। those are, you can say, you can say that those are the complementary or supplementary product, है ना, which complements it, or right। so this is the discussion that what should be the product line। product line means like there are some companies which have their, like especially this motor companies, they have their own tire manufacturing, they have their own nut and bolts and all these things। so what they do is they upstream their product line, है ना। तो वो क्या करती है कि वो जो रॉ मटेरियल जो जैसे टायर हो गया एंड ऑल दीज थिंग्स,
तो उनका प्रोडक्शन लाइन वहां से होता है ना, कि उनकी खुद की टायर है, उनका खुद का नट एंड बोल्ट एंड ऑल दिस थिंग, एंड उनका खुद का फिनिश प्रोडक्ट है, तो उनका प्रोडक्ट लाइन वो हो गया। सिमिलरली जैसे एप्पल वाला हमने एग्जांपल लिया, तो दिस वन, हाँ, तो ये आईफोन बना रहे हैं, आईफोन के साथ ये आईपॉड बना रहे हैं ना, तो इनका प्रोडक्ट लाइन ये हो गया। तो यही द डिस्कशन इज ऑल अबाउट कि प्रोडक्ट लाइन कितना बढ़ना चाहिए, या कैसा, किस प्रोडक्ट को यू शुड इंक्लूड इन योर प्रोडक्ट लाइन। क्या आप आईफोन बनाते बनाते आपको ये भी होना चाहिए कि चलो हमने वाटर बॉटल प्रोड्यूस कर दिया, वाटर बॉटल भी हमने साथ में बना दिया, तो क्या इज देयर एनी लिंक, इज देयर एनी लॉजिक, है ना? कि आपने आपने आईफोन बना रहे थे, यू हैव ऑल योर एक्सपर्टीज, यू हैव ऑल योर टेक्नोलॉजी, यू हैव ऑल योर रिसोर्स पर्सन फॉर मेकिंग दिस iPhone, and the complementary product that you are making is a water bottle. It is not a significant thing. So we are here to discuss कि what is the significance of ये जो product line हम बनाते हैं, क्या iPhone के साथ iPod बनाना जरूरी है, या गुड डिसीजन है इसलिए बनाना चाहिए, या फिर जरूरी है इसलिए बनाना चाहिए, ये सारे बना रहे इसलिए बनाना चाहिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ आईफोन बनाने से भी काम चल जाएगा। सो दिस इज द डिस्कशन इन हियर इन द प्रोडक्ट लाइन मिक्स। सो द प्रोडक्ट लाइन मिक्स इज बेसिकली, क्यों ये लाइन मिक्स कर ही क्यों रहे हैं, व्हाई नॉट जस्ट द कोर प्रोडक्ट, ये लाइन मिक्स कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू ऑप्टिमाइज आवर resources, we want to optimally use our resources। क्योंकि जब आप आईफोन बना रहे थे ना, तो आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो जैसे ब्लूटूथ एंड ऑल दोज थिंग्स, सेम टेक्नोलॉजी यूज करके आपको कोई डिफरेंट टेक्नोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई अलग से पैसा नहीं लगाना है, आपको कोई अलग से डेटा नहीं लगाना है, आपको कोई अलग से डेटा नहीं कलेक्ट करना है कि किस किस बंदे के पास आईफोन है। आपने एक बार आईफोन बनाया और बेचा और ये किया ना, तो आपका एक बार जो डेटा कलेक्ट हो गया, तो आपको उस कलेक्शन, उसी डेटा से आपको पता चल जाएगा कि कितने आईपॉड्स बनाने हैं, आपको उसी से अपना कस्टमर्स का पता लग जाएगा, उसी से आपको अपने अपनी टेक्नोलॉजी, आपका खुद का टेक्नोलॉजी कैसा वर्क कर रहा है वो पता लग जाएगा। तो आपको अलग से ना डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ना अलग से टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, ना अलग से रिसोर्स पर्सन हायर करना पड़ेगा, क्योंकि जो बंदे आपके लिए आईफोन बना दे रहे हैं ना, दोज पर्सन्स आर केपेबल इनफ टू मेक दैट आईपॉड आल्सो। तो आपको ना अलग से ह्यूमन रिसोर्स लगाना पड़ा, ना इंफ्रा लगाना पड़ा। अगर आपको ये बेसिक चीजें अलग से नहीं लगानी पड़ी और इसके साथ आप कुछ प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो उसी को तो कहते हैं प्रोडक्ट लाइन मिक्स। और ऐसे ही प्रोडक्ट को अपने लाइन में मिक्स करना चाहिए, ठीक है? तो प्रोडक्ट लाइन मिक्स में क्या होता है, बेसिक हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है ऑप्टिमाइज द रिसोर्स, ठीक है? ऑप्टिमाइज द रिसोर्स, ताकि आपके जैसे जो भी ह्यूमन रिसोर्स या जो भी लगे थे, उसी से अगर कुछ नया प्रोडक्ट बन जाए तो बेहतर है ना, यू कैन जस्ट सेल एंड हैव मोर प्रॉफिट, राइट? So the product line mix at plants, it influences the capacity। उससे क्या होगा, आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेटर होगा, आपका प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ेगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में also you can do। okay, so analyzing the demand volume relationship and product dependencies, it is essential for optimizing resources। So it is saying कि if why you are doing to optimize the resources। तो इसमें बेटर क्या है कि आप सबसे पहले क्या करो, डिमांड वॉल्यूम रिलेशनशिप को एनालाइज करो कि कितनी डिमांड है और कितना वॉल्यूम आपके पास है। प्रोडक्ट डिपेंडेंसी को एनालाइज करो, मतलब कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो दूसरे प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, प्रोडक्ट डिपेंडेंसी को एनालाइज करो, ठीक है? और उसके बाद आप अपना जो है प्रोडक्ट लाइन मिक्स को मिक्स बनाओ। ओके, नेक्स्ट इज प्लानिंग कंसिडरेशन। मतलब यू शुड अंडरस्टैंड द इंटरप्ले बिटवीन द प्रोडक्शन वेरिएशन। अगर आप प्रोडक्शन वेरिएशन कर रहे हो तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइक द you can say overlapping things। okay, the production capabilities, okay, so the planning consideration means you have to understand the interplay between the product variation, the product capabilities, the market demand। okay, so all these are यूजफुल एंड इफेक्टिव इन सेल्स एंड ऑपरेशंस, ठीक है? तो सेल्स एंड ऑपरेशन दोनों को आप चेक करोगे कि व्हाट द मार्केट एंड डिमांडिंग एंड व्हाट
is your capability. Okay, so tailoring means you can just check on which product mix is better as per the market dynamics and trend and seasonality, which can help you in being agile and which can help you in being competitive, right? So you have to plan accordingly. Next is flexibility and adaptability, means you have to achieve a balance between adaptable product line mix, okay, with the demand fluctuations. So you should you should use something which can help you in quick changeover and facilitating effective resource allocation in response to the shifting customers need. Okay, so if the customer is demanding, like for example earlier iPhone was okay. So earlier there were Bluetooth or there was some other type of earphone. Then just came the iPod. You know? It is just saying that the product lines should be flexible and adaptable. That means the resources should be allocated in such a way that it can be changed with the changing customer preference. है ना? So this is what you have to discuss in the product line mix at plants. So you have to discuss on the significance. What is the importance of having the product line mix? The importance is that the profitability can be increased, the optimization can be done on the resources, है? But however you have to consider the planning. Planning should be very proper. Planning should be such that it can be like the product variations and production capabilities, all these should be checked between the sales and operation, okay, and also there should be flexibility and adaptability option available. Next is production planning and scheduling. Production planning and scheduling means uh, you should have an efficient production planning and scheduling in order to have a balance between the demand forecast, the production capability and the inventory level. ठीक है, जो आप प्लानिंग प्रोडक्शन की प्लानिंग करोगे ना, वो ऐसा करना है कि आप इन तीनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन रख पाओ कि इन तीनों, जो डिमांड आप कर रहे हो, डिमांड की जो फोरकास्टिंग कर रहे हो, जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी आपके पास अवेलेबल है और जितनी इन्वेंट्री आपके पास ऑलरेडी मैनेज्ड है, ठीक है, तो इन तीनों के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, एक प्लानिंग होना चाहिए, एक शेड्यूलिंग होना चाहिए प्रॉपर, एक विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिटिक्स द इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर्ड. Okay, so what you can do is you can utilize the advanced analytics to optimize the production sequences, है ना? To optimize the production sequence, minimize the setup time, and synchronize the workflow between all these elements, that enhances the productivity and responsiveness. Okay, so this should be checked that the technology or the analytics that you are using, it should help in optimizing your production sequences. Also, it should synchronize the workflow, mm, that enhances productivity and responsiveness. Okay, so this has to be done. Next is integrated approach. Integrated approach means uh, the sales and the operation should be integrated. That we are discussing right from the very beginning, that there should be this one synchronization between, or there should be integration between all these things. So it is just suggesting that the sales and operation has to be synchronized. Okay, then only it will allow the organization to align the supply chain activities with the demand patterns. Okay. So
this integration is very important because it will help in optimizing the resource utilization, है ना. अगर आप properly integrated रहोगे ना, properly आपका sales department, आपका operation जानता रहेगा कि how much has been sold and what is the demand of the market. अगर ये production house को properly पता है ना और sales से वो properly connected है और integrated है ना, तो आपका जो resource है वो भी properly utilize होगा, कभी over और under stocking की situation नहीं आएगी, आपका lead time भी reduce होगा, and also it will promise to ensure consistent service level. Okay. इसके लिए what you can do is you can just have some performance metrics. Okay. Performance metrics मतलब आप अपने real time performance को check, आप अपने परफॉर्मेंस को जो है रियल टाइम परफॉर्मेंस को यू कैन जस्ट चेक. ओके. So you can just leverage the analytics. You can use analytics to check the real time performance, also continuously improving and trying to excel the operational efficiency, है ना. तो आप क्या कर सकते हो कि यू कैन यूज सम एनालिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी टू लेवरेज योर लाइक टू बेसिकली टू मेजर योर परफॉर्मेंस, एंड आप कंटिन्यूअस इंप्रूव कर सकते हो. ठीक है. योर operational excellence by doing some operational excellence. Okay, so what are the key metrics? Key metrics क्या क्या जो और सारे organization use करते हैं. First one is production lead time. They measure their production lead time, और इस production lead time के वजह से Zara is able to like stand out in its competition, है ना. तो वो चीज होता है कि प्रोडक्शन लीड टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हो. ओके. और ऑन टाइम डिलीवरी कितने बार, हाउ out of 10, like you can just rate out ki how many times you are able to provide the delivery on time, है ना. Also you can identify the bottlenecks, है ना, and enhance the overall production efficiency. So production planning and scheduling is very important. You can use analytics to get the balance between the demand forecast, the production capability, and the inventory level, and also these need to be integrated so that you can utilize the resources optimally. And what you can do is you can use some performance metrics. Okay, however there are some challenges, and the challenges must be related to the data, because यहाँ आप data analytics use कर रहे हो, और data analytics जैसे use कर रहे हो तो सबसे बड़ा challenge यही होता है कि जो data आपने use किया है, is that data correct, is that data actually representing the population, right. तो क्योंकि आप सारा काम उस डेटा पे कर रहे हो, आप उस डेटा के बेसिस पर ही डिमांड की फोरकास्टिंग कर रहे हो, आप उस डेटा के बेसिस पर ही आप क्या कर रहे हो कि प्रोडक्शन कर रहे हो. तो this is very important, the data is very important. So if you have inadequate data or if you have bad quality data, then there will be many issues. Okay, then you will not be getting a proper analytics, neither you will be able to manage the sales and operation process, nor you will be able to balance the long term and short term strategic planning, because these will not be synchronized then. ठीक है. तो सोल्यूशन क्या है कि आप एक काम करो कि सबसे पहले you take up a quality data, है ना. You actually take up the customer feedback, है ना. And what you can do is you can use the advanced forecasting models. ठीक है. और वो models जो है वो data governance and all these things should be taken care of. You can use the advanced forecasting models, which will improve your cross functional collaboration. Okay. And then you can implement some agile planning methodology and technology that will enable you to make a decision support system that will foster resilience and adaptability, right. So with that data you can make a better decision, and also you can be very resilient and you will be adaptable. So what is the key? The key is the change management. So you should always be adaptive enough, है ना. आपको change के लिए हमेशा ready रहना है. ठीक है. So you have to successfully tackle all the challenges which are which
नेसेसिएट्स, जो भी आपके ऐसे चैलेंजेस आ रहे जिसके वजह से यू हैव टू स्विच ऑन, यू शुड बी रेडी टू स्विच टू द कल्चरल शिफ्ट. लाइक नाउ डेज कल्चरल शिफ्ट हियर मीन्स, कल्चरल शिफ्ट का मतलब ये है कि पहले क्या टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती थी कहीं भी, इवन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में तो टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती थी. तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें या तो एम्प्लॉयज या तो टॉप मैनेजर्स ऐसे हैं जो चेंज नहीं होना चाहते थे, जिसका कंसिक्वेंस नोकिया और जेरोक्स है ना. तो वो चेंज नहीं होना चाहते थे, दे डिड नॉट वांट टू. तो उनमें कल्चरल शिफ्ट, वो कल्चरल शिफ्ट नहीं चाहते थे. जैसे आज का आईटी सेक्टर है और ये सब है, तो ये इनमें क्या एक बिल्कुल चेंज आ गया. एवरीथिंग इज बीन डन एट द रियल टाइम, एवरीथिंग इज डन थ्रू द डेटा एनालिटिक्स, है ना. तो this is the suggestion that if you want to like go on with the trend, then you have to tackle with the challenges. And in that case, if you have to make even a cultural shift towards the data driven decision making, then the organization should not be mm, should be agile enough to the change, should be adaptive enough to the change, and should develop a shared vision, building analytical capabilities, and also nurturing the improvement mindset which is necessary for a sustainable success. Okay, so this should be done, the data should be used. So this is the solution that is being given. Okay, so the conclusion is that first thing is there needs to be a continuous improvement. So you need to have a culture where, yes, Ma'am, in previous yes, slide was written balancing short-term responsiveness. I huh. want to know what is this talking about? Short term responsiveness means responsive means you are एबल टू रिवर्ट टू द दिस वन मार्केट. मतलब मार्केट में जो भी चेंजेस आ रहा है या मार्केट का प्रेफरेंस जो चेंज हो रहा है या टेस्ट जो चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज, मतलब आप उसको वो चेंज प्रोडक्ट दे पा रहे हो, है ना. इफ द मार्केट इज डिमांडिंग समथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो पहले जो वो लीड वाले ईयरफोन्स आते थे, है ना, जिसमें प्लग इन आप करते थे एंड देन यू यूज टू हियर, है ना. अगर मार्केट आपको डिमांड करने लगा कि द ईयरपॉड्स एंड ब्लूटूथ थिंग्स, देन यू आर एबल टू स्विच ऑन टू. तो शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सिव भी हो, मतलब शॉर्ट टर्म में विद इन द गिवन पीरियड आप उसको शॉर्ट टर्म में भी आप चेंज करो, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म, मतलब आप अपने प्लानिंग, आप अपने स्ट्रेटेजी सब कुछ चेंज करके लॉन्ग टर्म ऑल्सो यू आर एबल टू कम अप विद द सोल्यूशन, है ना. तो ये हो गया कि यू आर बैलेंसिंग द शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सिवनेस अलोंग विद द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या है ना कि आपको पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, आपको पूरा क्या करना पड़ता है. लाइक फॉर एग्जांपल एक्चुअली क्या हुआ था, जैसे ये जो लीड वाले ईयरफोन्स आते थे, तो मानो अगर 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 मार्केट इज डिमांडिंग नाउ द ब्लूटूथ और दिस वन पॉड्स, है ना. तो उस टाइम क्या हुआ कि मेनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे मे नॉट बी रेडी विद दैट, है ना. तो उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर या पूरी टेक्नोलॉजी नहीं थी ब्लूटूथ के साथ जो कनेक्ट करा पाए, है ना. तो फिर उन्होंने क्या किया, फॉर दैट शॉर्ट पीरियड दे टुक or purchased or outsourced this. Many of the organization they outsource this to other organizations, है ना, जो पहले से बनाते थे उनको उन्होंने outsource कर दिया. और उसके बाद फिर in the longer period what they did is उन्होंने अपना इंफ्रा बनाया, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग चेंज की, एंड देन दे स्टार्टेड डूइंग दिस. तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप वो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, या शॉर्ट मतलब बेसिकली शॉर्ट टर्म भी रिस्पॉन्सिव हो, शॉर्ट टर्म में भी यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, एंड इन लॉन्ग टर्म यू हैव टू बिल्ड ऑन दैट प्लानिंग. तो बेसिकली लॉजिस्टिक में जनरली ये होता है कि इन शॉर्ट टर्म दे आर नॉट एबल टू मीट, तो शॉर्ट टर्म में वो आउटसोर्सिंग कर देते हैं, एंड इन लॉन्ग टर्म दे हैव देयर ओन. ओके, तो कॉमन हर्डल जो है उसको अवॉइड करने के लिए यू शुड मतलब यू शुड बैलेंस बिटवीन द टू, है ना. कि लॉन्ग टर्म में भी आप उसका आंसर कर पाओ, और शॉर्ट टर्म में भी यू शुड बी एबल टू एजाइल इनफ टू फटाफट मार्केट डायनेमिक को आप अडॉप्ट कर पाओ, और मार्केट डायनेमिक चेंजिंग मार्केट को आप अपने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर पाओ. ठीक है. तो दीज वर द चैलेंजेस. कि क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो कि अगर कोई भी नया टेक्नोलॉजी है ये आ गया, तो दे टेक अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू अडॉप्ट टू द चेंजेस, है ना. जैसे कोविड-19 आया तो बहुत सारे ऐसे कंपनी थे जो कि अपने आप को रिमोट लोकेशंस पे काम कराना या रिमोट लोकेशंस पर सर्विस दे पाना, दैट वाज अ डिफिकल्ट थिंग फॉर देम, एंड दे वर नॉट रेडी, एंड
they took a very long period of time to provide themselves in the to provide them with the remote services, है ना. इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स और कॉम्पिटिटर्स आ गए जो वो सर्विसेज रिमोट पे मतलब वो सर्विसेज उस प्रोवाइडेड कंडीशन में दे पा रहे थे. तो दे एक्सेल्ड, and many companies which were big giant but they were not able to provide matlab respond to the changing condition, then they lag behind. So it is the suggestion कि आपको शॉर्ट टर्म में भी रिस्पॉन्सिव बनना है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी करनी है. ठीक है. तो शॉर्ट टर्म के लिए जैसे आप क्या कर सकते हो कि प्रॉब्लम ड्रिवन डेटा एनालिसिस लगाकर निकाल सकते हो कि इसमें क्या क्या सॉल्यूशन होना चाहिए. भाई अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हो गया है कि रिमोट एक्सेस चाहिए, मतलब वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट चाहिए. तो आप प्रॉब्लम ड्रिवन डेटा एनालिटिक्स लगा करके देख सकते हो कि व्हाट कैन बी द सोल्यूशन. और लॉन्ग टर्म कहने का मतलब है कि डेटा ड्रिवन जो आपका एनालिसिस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आप इससे बेटर या अपकमिंग जो जनरेशन वो क्या डिमांड करेगी और अकॉर्डिंगली आपको किस तरह से स्विच करना चाहिए, है ना. तो दिस इज द थिंग दैट दे आर सेइंग कि डेटा एनालिटिक्स आप लगाकर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की प्लानिंग करो, राइट. ओके. Yes, ma'am. ओके. So in the slide just the discussion is कि continue like what will be the conclusion and what will the next step. So first thing is you should continuously improve. That means your organization should be such that you should हैव अ कल्चर. आपके यहाँ वो कल्चर होनी चाहिए कि आप मार्केट में जो भी आता है, टेक्नोलॉजी आता है, एडवांसमेंट आता है, आप उससे कंफर्टेबल रहो और आप उसको अप्लाई करो और सीखो, है ना. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयज होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं चेंज को, जो टेक्नोलॉजी को रेजिस्ट करते हैं, इनोवेशन को रेजिस्ट करते हैं. तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन. द सोल्यूशन इज यू शुड कंटिन्यूअसली इम्प्रूव एंड इनोवेट फॉर अडेप्टिंग टू द इवॉल्विंग मार्केट डायनेमिक्स. ओके. जो मार्केट है वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली वो नए नए चीजों का डिमांड कर रहे हैं. तो यू शुड बी in a position to leverage the full potential of analytics. आप एनालिटिक्स का फुल पोटेंशियल यूज करो कहाँ पर, सेल्स एंड ऑपरेशन में, ताकि आप जो मार्केट है उसके साथ चल पाओ. एंड यू शुड मॉनिटर द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. आपको हमेशा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को मॉनिटर करना चाहिए. how you can do is you can use the analytical models. Okay. एंड यू शुड कंपेयर, जैसे जो इंडस्ट्री उस पूरे मतलब इसमें लीड कर रहे हैं, है ना, उस पूरे सिचुएशन में या इस पूरे जनरेशन में जो इंडस्ट्री लीड कर रहे हैं, आपको उस इंडस्ट्री का बेंचमार्क चेक करना चाहिए और अपने आप को वहां तक स्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए. ठीक है. तो दिस इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. व्हाट इज द की टेक अवे? द की टेक अवे इज you should use you know that analytics is so very important in optimizing the sale, in optimizing the operation, in optimizing the planning, in enhancing the decision making. So what you can do is you can improve the operational efficiency, you can improve the agility, and you should provide the tailored services to the consumers. You should have a strategic decision making on the location of the plant. You should adapt to the production and planning. Okay. And you should be sustainable supply chain. You should provide the sustainable supply chain because that is only the thing that will stay for a longer period of time. So sustainable competitive advantages should be taken, because you know the consumer, the government, everyone wants the organization to be sustainable. So you should try to have your like supply chain in the same direction. Next, what you can do is organization basically they are trying to identify the areas where the analytics can be used, and then they are investing in advanced planning solutions. And also they are establishing cross functional means all the organizations they are sharing the information. Okay. And there is visibility among them. So the organization, what they are doing is they are actually putting a huge amount of money in investing in advanced planning solutions, and they are establishing cross-functional S&O, sales and operation
teams. They are making the teams there, and they are also nurturing data fluency and forging strategic partnership which can drive the successful adoption. So they are making partnership with the suppliers which can help in successful adoption of the analytics in the sales and operation planning. Okay. So any doubt anywhere in this chapter? Now you are exhausted. आप लोग सुन नहीं रहे हो या you don't have any doubt? No doubt, ma'am. No doubt. Very good. Can we move ahead with chapter number 5, I guess? Okay. Before moving to chapter 5, I think it's better to discuss some MCQs ताकि आप लोग सो रहे होगे तो जाग जाओगे. What do you say? Ma'am, I have one doubt. Um, Yes, please. like topics तो जो आप करा रहे हो वो तो सेम है एज जैसे बुक में मेंशन है, बट इसमें पॉइंट्स जो है ना वो टोटली डिफरेंट, मतलब अलग है आप जो करा रहे हो और बुक में जो है. ये बुक तो मेरी ही है, टोटली डिफरेंट कैसे होगा? एक What बार मैं will बुक ओपन कर लेती हूँ. है? Just give me 1 minute. I'll open the book also. Yes. Supply chain analytics. Which point? Which point? Any particular point you are discussing on? Juhi? You're discussing on any particular point or overall? ओवरऑल जैसे आपने Overall. कराया था सर्विस लेवल वाला, तो उसमें कौन आपके सा? 3 पॉइंट थे. डिफरेंशिएटेड सर्विस लेवल टू प्रोडक्ट एंड कस्टमर. Okay. तो इसमें Okay. आपका टेलर्ड सर्विस लेवल, बट बुक में क्या पॉइंट्स हैं? स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव, बैलेंसिंग एक्ट, मैनेजिंग सर्विस लेवल, इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन थ्रू एनालिटिक्स, एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन. So, differentiated service level में a strategic imperative and managing service levels and optimization through analytics. Basically, idea वही है actually. Here I have given point wise. A strategic imperative means strategically what you are doing. Okay. Strategically where you are exploring. Okay. Let's see what is written here. Read this paragraph. In the intricate dance of supply chain management, inbound logistics holds a pivotal role, governing the efficient movement of material,
and goods from suppliers to manufacturers or warehouses. The advent of analytics has brought about a paradigm shift in how organizations approach and optimize these crucial processes. This exploration dives deep into the multifaceted impact of analytics in inbound logistics, dissecting the optimization of transportation routes, the precising of demand forecasting through predictive analytics, and the strategic implementation of data driven inventory management strategies. Okay, so in strategic imperative, I have just discussed ki how this strategy can be made. Okay, so the first few lines, it was basically discussing on the efficient movement of goods, materials from supplier to manufacturer warehouses. So it has brought a paradigm shift in how organizations approach and optimize these crucial processes. So so how the organizations are approaching on providing the movement of materials. Okay, movement of material from supplier to manufacturer is like all the organization, they have their different approaches. Okay, so they have their different approaches, how they are sourcing their raw material and how they are using the logistic. So every organization, they have their own approaches. But now with the use of the data analytics, there is a shift, and it is like uh, advised, you can say, or you can just see that by using the analytics in this logistics and all these transportation route and all these, so this can be optimized. And also the predictive analytics can be used to provide the differentiated service levels. Okay, सो डिफरेंशिएटेड सर्विस लेवल, जैसा अभी हमने एग्जांपल लिया था ना अमेजन का, जिसमें कि अमेजन व्हाट इट डज इज इट यूजेस अ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। वो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को यूज करके और फिर क्या करता है कि आपको आप बिफोर यू गिव द एक्चुअल ऑर्डर, वो ऑर्डर क्या होता है कि आपके नियर बाय वेयर हाउस में आ जाता है, और जैसे आप ऑर्डर करते हो आपको बहुत ही शॉर्ट पीरियड में वो डिलीवर हो जाता है। तो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो अलग अलग इसी तरह से ना अलग अलग एनालिटिक्स यूज कर रहे हैं, और इस तरह से करके अपने कंज्यूमर्स को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशिएटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, so that they can डिफरेंशिएटेड सर्विस। मतलब डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, जो और सारे कंज्यूमर्स नहीं दे, और सारे ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे रहे। जैसे जो फास्टेस्ट डिलीवरी का प्रॉमिस है, ब्लिंकिट का 10 मिनट का जो डिलीवरी का प्रोसेस है, ये सब क्या है, ये डिफरेंशिएटेड ही है। तो ये कैसे कर पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं by using all the optimum routes, by using all the predictive analytics, और ये सारा जो भी डेटा एनालिटिक्स के टूल्स डिस्कस हुए, यही सारे टूल्स की वजह से तो ये प्रिडिक्टिव सॉरी ये डिफरेंशिएटेड सर्विस दे पा रहे हैं या टेलर्ड सर्विस दे पा रहे हैं, है ना। नहीं तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि कोई भी प्रोडक्ट जो आपने अभी परचेज किया या ऑर्डर किया और उसमें कस्टमाइजेशन कराया, प्रिंट कराया या कुछ कराया, और वो विद इन द सेम डे डिलीवर हो जाए। ये डिलीवर हो रहा है क्योंकि वो बहुत सारे एनालिटिकल टूल यूज कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में ना यही लिखा हुआ है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये उनका तरीका अलग है कि वो कैसे रॉ मटेरियल को सप्लायर्स टू वेयर हाउस की कैसे पहुंचाते हैं और करते हैं। और नावाडेज जब ये मल्टी फेसेड सब कुछ हो रहा है ना, तो इस समय बहुत सारे एनालिटिकल टूल्स यूज हो रहा है हर जगह पे। लेट इट बी लॉजिस्टिक, लेट इट बी ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, लेट इट बी डिमांड फोरकास्टिंग, हर जगह यूज हो रहा है। और इसकी वजह से जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंशिएटेड है अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ इसी से रिलेटेड है, दैट इज बैलेंसिंग एक्ट। बैलेंसिंग एक्ट में द डिस्कशन इज ऑल अबाउट द डिस्कशन बिटवीन मीटिंग द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन एंड ऑप्टिमाइजिंग द ऑपरेशनल कॉस्ट, है ना। तो मतलब डिस्कशन है कि कैसे डिस्क्रिप्टिव मतलब एनालिटिक्स को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि सारे डेटा को कलेक्ट करती है, और उसके बाद प्रॉपर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग वगैरह लगा के रियल टाइम में मॉनिटरिंग करके ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, डिमांड पैटर्न को समझ के अकॉर्डिंगली वो फोरकास्ट करती है। और इस तरह से जो है ना, सारे सर्विसेज को, मतलब प्रोडक्शन का, सेल्स का, लॉजिस्टिक का, डिस्ट्रीब्यूशन, सारी सर्विस को मतलब अलाइन करती है। ओके,
तो किस तरह से सारे एनालिटिक्स को यूज करने की वजह से डिस्क्रिप्टिव यूज किया, प्रिडिक्टिव यूज किया, इस तरह से करके सेकंड पैराग्राफ में आप देखोगे तो यही है बैलेंसिंग एक्ट मींस हाउ दीज आर बीइंग बैलेंस्ड, कैसे फोरकास्टिंग को मतलब एक्चुअल फोरकास्टिंग बनाया जा रहा है और फोरकास्टिंग को सेल से मैच किया जा रहा है। तो ये पॉसिबल हो रहा है क्योंकि जो फोरकास्टिंग आप कर रहे हो वो तो आप हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे कर रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हो आप पैटर्न वगैरह ढूंढ के फाइंड आउट करके प्रॉपर एल्गोरिदम लगा के आप प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स करके मशीन लर्निंग का यूज कर कर आप क्या कर रहे हो कि रियल टाइम डेटा ट्रैक कर रहे हो और फिर आप एडेप्टिंग मार्केट डिमांड को सूट कर रहे हो, है ना। तो यही सारा कुछ है कि एडिशनली आप क्या कर रहे हो कि यू आर यूजिंग एनालिटिक्स इन सेफ्टी स्टॉक लेवल मेंटेनेंस ऑल्सो, है ना, बफर स्टॉक मेंटेनेंस में भी आप काम ले रहे हो। एंड also you through demand sensing technology the organization they are able to enhance their responsiveness to shift in customer behavior, है ना। इसकी वजह से ना ही कभी स्टॉक आउट वाली सिचुएशन आएगी और ना ही कभी मतलब कस्टमर को बैड एक्सपीरियंस होगा, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो है इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन थ्रू एनालिटिक्स। इसमें वही डिस्कशन है कि जो है एनालिटिक्स जो है वो लाइव ब्लड बन गया है। रीजन बीइंग कि एवरीथिंग राइट फ्रॉम डिमांड फोरकास्टिंग टू एवरीथिंग इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ एनालिटिक्स, है ना। जबकि ट्रेडिशनली जो है वो ये सब एनालिटिक्स वगैरह यूज नहीं होते थे, है ना। तो नाउअडेज एनालिटिक्स तो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन गया है और इसकी वजह से एक पूरा टोटल शिफ्ट आ गया है सप्लाई चेन में, जहां पे अब जो स्ट्रेटेजीज बनते हैं ना वो रिएक्टिव स्ट्रेटेजीज नहीं रहते, अब मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजीज जो रहते हैं वो प्रोएक्टिव रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पहले से रेडी रहती है ना। सो अब जो है रेदर देन आप जो डिमांड फ्लक्चुएशन का जो डिफरेंस देखोगे उससे ज्यादा अभी आपको जो है ना या फिर इन्वेंट्री लेवल या फिर डिमांड पैटर्न्स का ये सब देखोगे उससे ज्यादा अभी क्या है कि मशीन लर्निंग यूज करके आप क्या करते हो कि जस्ट इन टाइम पे ज्यादा काम होता है ना। तो क्योंकि जस्ट इन टाइम से क्या होता है कि लीड टाइम आपका कम हो जाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेटर हो जाता है ना, आप टेलर्ड सर्विस प्रोवाइड कर पाते हो। टेलर्ड सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हो, तभी तो प्रोवाइड करते हो कि जैसे आपने ऑर्डर जैसे आपका ऑर्डर प्लेस हुआ वैसे आप प्रोडक्शन हाउस को ऑर्डर देते हो कि दिस टी शर्ट हैज टू बी प्रिंटेड दिस वे या फिर दिस विद दिस पिक्चर, है ना। तो वो अकॉर्डिंगली फटाफट प्रिंट करके देता है। द पैकिंग जो आपका रहता है पैकिंग ये वो पैक करता है एंड लॉजिस्टिक में जाता है, डिलीवरी होता है ना। तो एवरीथिंग इज सो अलाइंड, सो इंटीग्रेटेड, सो सिंक्रोनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द डेटा एनालिटिक्स कि आप अभी का जो ज्यादा से ज्यादा जो काम होता है वो ज्यादा से ज्यादा जस्ट इन टाइम वाला इन्वेंटरी स्ट्रेटेजी मेंटेन होता है और इस वजह से जो है टेलर मेड सर्विस आप दे पाते हो। मोर ओवर एनालिटिक्स के थ्रू आपको एक लेंस मिलता है। लेंस मींस एक आपको प्रॉपर मतलब आप प्रॉपरली इंसाइट कर पाते हो, देख पाते हो दूर तक का, प्रिडिक्ट कर पाते हो, समझ पाते हो डेटा वेरिएबिलिटी को, है ना। कि आप किस तरह से अगर अपने इन्वेंट्री में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा, अगर आप टेलरिंग अप्रोच लगाओगे तो आप कैसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड कर पाओगे अपने प्रोडक्ट में जिससे कि आपका डिमांड हाई हो, वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स लो हो एज कंपेयर टू द स्टॉकिंग स्ट्रेटेजी, है ना। तो इस तरह से आप अपना जो आपके जो आइटम्स है उसको हाई वेरिएबिलिटी आइटम बना सकते हो और ओवरऑल जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने इन्वेंट्री एफिशिएंसी को। हाई वेरिएबिलिटी करने का मतलब आप बहुत सारे वेरिएशंस मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप वेडिंग के लिए गिफ्ट रैप करा रहे हो, आप वैलेंटाइंस डे के लिए गिफ्ट रैप करा रहे हो, आप बर्थडे गिफ्ट के लिए रैप करा, मतलब आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, मतलब बहुत सारा वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे आपको आइटम वेरिएबिलिटी दे पा रहा है। तो ये सब पॉसिबल कैसे हो पा रहा है, ये सब पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द एनालिटिक्स और बिकॉज ऑफ दीज न्यू टेक्नोलॉजीज एंड बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ जिट स्ट्रेटेजीज, है ना, ये सारे स्ट्रेटेजी की वजह से। तो ऑल द डिस्कशन इज अराउंड दैट ओनली, बस यहाँ पर ये है कि आपको पार्ट वाइज डिस्कशन है एंड इन PPT, you know, with the limit, we have the limitation of the slides. If I will put everything in the slide ना तो आपको ना समझ में आएगा ना आपको समझने का मन करेगा, इसलिए हमारे पास पीपीटी में ना लिमिटेशंस होता है, इसलिए हम सिर्फ उसमें कोर पॉइंट्स लेते हैं, है ना। बट द जिस्ट ऑफ दिस इज ओनली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ओके। एंड द थर्ड पॉइंट इज इनहैंसिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो आपको यहाँ पे वही दिखाया गया कि अगर आप डिफरेंशिएटेड सर्विस लेवल दोगे ना तो कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, आपका ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी जो होगा वो बेटर कॉम्पिटिटिव बनेगा, है ना।
और आप अलाइन कर पाओगे, बेटर अलाइन कर पाओगे अपने सर्विस लेवल को विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर. ठीक है. सो using the analytics in the organization can help you understand the customer behavior, can help you understand the preference of the customer, can help you understand the their purchasing pattern also. And इस तरह से क्या होगा ना कि आप बेटर अपने सर्विस लेवल को कस्टमाइज कर पाओगे, और इससे क्या होगा कि आपका डिमांड, प्रोडक्ट का डिमांड हाई होगा, कस्टमर प्रेफर करेंगे, है ना. और साथ ही साथ आप चूंकि एनालिटिक्स यूज कर रहे हो तो आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा, कस्टमर का फीडबैक आएगा, सेंटिमेंट एनालिसिस आप कर सकते हो कि कौन सा जो है कस्टमर किस टाइप से रिएक्ट कर रहा है, उनका उनके सेंटिमेंट्स को एनालाइज कर सकते हो, और फर्दर आप रिफाइन कर सकते हो अपने सर्विस लेवल स्ट्रेटजीज को, है ना. और इस तरह से करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा अच्छा और ज्यादा स्विफ्ट बना सकते हो, राइट. और this way you can also personalize the promotions. आप प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट जो करते हो उसको ज्यादा पर्सनलाइज, कोई किस आप एडवर्टीजमेंट देखते हो ना, तो उसमें कैसे पर्सनलाइज करके दिया रहता है कि आपको भी ये इश्यूज होता है, आपको भी ऐसा लगता है, ऐसे करके एडवर्टीजमेंट जो भी रहता है. आप अगर मसाला, कुछ भी, एक मैगी मसाला का भी एडवर्टीजमेंट देखोगे तो वो कैसे रहता है कि लाइक इट इज इनहेंसिंग, मतलब आप नॉर्मल खाना खाते हो, आपको वो टेस्ट नहीं आ रहा, बट जैसे आपने डाला आपको कुछ enhance होकर, मतलब they try to personalize the ad. So this is what they are saying कि even the ads and promotions can be personalized, and incentives, creating a tailored experience for the customers. So historical data, by analyzing the historical data you can predict a future trend, and then you can target the promotions accordingly to satisfy the customer, to gain the loyalty of the customer. And thus this is this strategic, जो strategically आप जो develop करें, this strategic imperative of differentiating, of providing the differentiated service level is actually very important for the modern supply chain management. So analytics, because it has the power of predicting, because it has the power of real time insights, it becomes the core of achieving the competition, core of achieving, or core of putting yourself at the first in the competition. ठीक है. So the organization should maintain a deliberate between the maintain the balance between the service level to the precision of inventory optimization and ultimate goal of enhancing the customer satisfaction. Okay. So this is what is given here. तो बुक में एक्चुअली थोड़ा सा तो लेंदी, मतलब थोड़ा तो डिटेल रहता है. सो क्योंकि बुक इसके लिए है ना कि इफ यू आर नॉट अटेंडेड द क्लास, देन कम से कम आप एक बार बुक की रीडिंग करो, 2 बार बुक की रीडिंग करो, तो आपको समझ में आए. इसलिए बुक ना थोड़ा सा आपका डिटेल रहता है. बुक इज नॉट लाइक बिल्कुल मतलब यू जस्ट लाइक पीपीटी. पीपीटी में क्या होता है ना, पीपीटी वी हैव टू गिव इन अ वेरी प्रिसाइज वे, है ना. 6 से 7 स्लाइड में मुझे पूरा चैप्टर्स कंप्लीट करना रहता है ना, क्योंकि इससे ज्यादा अगर स्लाइड्स होगा ना तो देन इट बिकम्स अ वेरी लेंदी. जैसे स्टार्टिंग के मैंने 1-2 चैप्टर्स में ना अपना पीपीटी स्लाइड्स काफी लेंदी रखा था, 18-20 स्लाइड्स रहते थे. उसमें क्या होता था कि मैं एक तो आई वाज नॉट एबल टू कवर दैट, है ना. मैं 2-3 क्लास में भी वो कवर नहीं कर पाती थी. दूसरा क्या होता था, इट बिकम्स लेंदी एंड बोरिंग फॉर यू एज वेल, है ना. दैट्स व्हाई in book we have all the detail, and in ppts we just discuss on the important points. Okay. So I can say that neither book nor the PPT is substitute to one another, but still, if you like go through both of these, then you can have a better understanding of the subject matter, because through PPTs you can get the idea, you can have understanding, you can build the pillar of the subject, and then for the detailed study you can go for the a particular study material, right? You agree with us? Yes, ma'am. Okay. So
The question have not been given here in the chapter. By mistake, it is left out. Ma'am, can we continue with fifth chapter? We can As continue with the fifth chapter, time. okay? Huh? Because we have less time actually. Okay. Then let's continue with the fifth chapter. Once we are done with all the chapters, then we'll go for the questions and the MCQs, okay? Sharing the PPT again. Oh, this is done, no? So now we'll be okay. I'm sharing the PPT again. Okay, so now we'll be discussing on analytics in distribution. How can analytics be used in distribution? Okay, distribution means distribution is related to Logistics. logistics. Okay, so the first discussion is about the location of the distribution center. Where all the distribution centers should be located. So it is suggested that you should consider the geographical factors first. Geographical factors means you should check on whether the geographical location which you are like choosing for the distribution center, whether that is at the proximity to the supplier, means the supplier is also near to the means it is at a proper distance, it is at a reasonable distance to the supplier, so that if you can, so that there is not much cost involved in the transportation of the raw material. Okay, so geographical factors such as proximity to suppliers, the customers should also be proxy at a proxy distance, right? And the transportation infrastructure, you know, that is the core, that is crucial. It plays a crucial role in determining the optimal location for the distribution center. So that is available or not. So analyzing all these factors, it can improve the supply chain efficiency and reduce the transportation cost. Okay, so this point, considering this point is very important. The next point is market demand. You have to understand the market demand pattern and the customer demographic, which type of customer is available at which type of location. Like for example, we discussed in the class that South Delhi or the this one is the you can find more number of students there, है ना? So you can just get the idea of the demographics of your customers. Okay, so what age, what is their profession, and what all they are doing in life, and all these things, the demographic you can just get on, and you, with that you can just understand the market demand pattern ki kis tarah ki cheezein is area mein required hongi. Okay, because that is very important in selecting the the distribution center location. So you can use, what you can use is, you can use analytics to identify the areas which have high demand which can lead to better inventory management and customer satisfaction. Okay, so you can use analytics to identify the areas which can be like, which can demand more and which can lead to better inventory management, so where it should be located. Okay, next is the next point you should consider before locating your distribution center is the operational cost. That means we have already discussed that wherever you are locating your plant or you're locating your distribution center, you need labor.
So you should check on that the labor is available there at a competitive price, the taxes there in that region is reasonable, is normal, or if you can get any substitute also, then sorry, substitute, not subsidiary, you should check for any subsidiary. If there is any subsidiary available, then also you should check for the real estate expenses, because that also is very that also causes a good cost to the organization. So all these should be understood, all this should be taken into account, and then only an informed decision should be made about the distribution center location. So by applying analytics to evaluate the cost factors, it can contribute to the overall profitability. अगर आप cost कम करोगे तो आपको automatically पता है कि आपका क्या होगा, profit increase हो जाएगा या फिर profit की तरफ contribute होगा, right? So, while locating the distribution center, what we are checking on? We are checking on the geographical factors, we are checking on the market demand, we are checking on the operational cost, right? Next discussion is on the transportation and distribution planning. So how can the transportation and distribution be planned? The very first thing is you have to check with the inventory management. You know, inventory management planning is so very important that if it is not managed properly, it can lead to high increase in the cost, in the carrying cost, in the holding cost. Okay, so that is why it is suggested to use analytics in synchronizing the supply chain operation, in synchronizing the supply chain, the sales, the production, and the inventory all should be synchronized. Then only there can be a proper this one, a proper integration can be made. Okay, so accurate demand forecasting, the very first important thing is accurate demand forecasting. The next is inventory optimization. So these can contribute to efficient distribution planning. अगर आपको properly पता है कि आपकी inventory में कितना सामान रखा है और आपको पता है exactly कि how much is the demand, if your demand is accurately forecasted and if you have optimized the inventory, then only तभी आप अपना distribution center अच्छा plan कर सकते हो. तभी अगर आपको पता है कि आपके पास कितना है और आपको कितना करना है ना, तभी आप अपना distribution planning proper और efficient कर सकते हो, right? दूसरा है route optimization. रूट ऑप्टिमाइजेशन में क्या है कि यू कैन like by using analytics, I've already discussed that analytics use करके आप बहुत सारे मेथड like आप अप्लाई कर सकते हो और आप अपना अपना रूट ऑप्टिमाइजेशन, बेसिकली क्या होता है, सिनेरियो एनालिसिस करके, एलपीपी एनालिसिस या फिर इस टाइप के टूल्स यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपने रूट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो. जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था कि व्हाट यू कैन डू इज, आप देख सकते हो कि प्लेन मतलब एयरवेज बेटर रहेगा या फिर दिस वन रेलवेज बेटर रहेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि सारे के पैरामीटर्स लाइक कॉस्ट पे बात करें तो लाइक रेलवेज इज मच चीपर देन द एयरवेज, है ना. अगर आपको ट्रेवल टाइम का बात करें तो एयरवेज विल बी मोस्ट बेनिफिट, मतलब इट विल टेक मच लेसर टाइम एज कंपेयर टू द रोडवेज एंड रेलवेज, है ना. तो ये सारी चीजें, तो आपको रूट ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या करना चाहिए कि यूज technologies, use some analytics to enhance the delivery efficiency to get the scenario analysis, है ना. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप हिस्टोरिकल डेटा और साथ ही साथ रियल टाइम ट्रैफिक इंफॉर्मेशन लेकर के यू कैन बिल्ड अप अ प्रोएक्टिव प्लानिंग एंड ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन रूट बना सकते हो, राइट. or and also you can just get a better selection of the modes of transportation that you are using in your distribution. ठीक है, तो distribution में you can like you can use strategic mode selection, strategic mode selection tool use करके you can improve your overall supply chain performance. Okay, तो when you have to take decision on transportation and distribution planning, then आपको सबसे पहले तो check on करना चाहिए the inventory management planning. आपको check on करना चाहिए कि आपके inventory management में analytics जरूर यूज हो रहा होना चाहिए, क्योंकि अगर एनालिटिक्स यूज होगा तभी सिंक्रोनाइजेशन होगा. किस किस के बीच में, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सेल्स, प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री. ठीक है, तो इनका सिंक्रोनाइजेशन इंपॉर्टेंट है. और अगर आप एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हो ना, तो इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज हो जाएगा और जिससे क्या होगा आपको पता है, आपका
आपकी एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग हो पाएगी। नेक्स्ट इज रूट ऑप्टिमाइजेशन। रूट ऑप्टिमाइजेशन में भी अब डिस्कस कि आप प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड रूट को रूट ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट जान सकते हो, जिसमें क्या होगा कि आपका फ्यूल कंजम्पशन कितना हो रहा है, आपका ट्रांजिट टाइम कितना लग रहा है, डिलीवरी एफिशिएंसी कैसी, ये सारा कुछ आप सिनेरियो एनालिसिस करके चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनालिटिक्स। फिर मोड सिलेक्शन भी अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो ये सारा चेक इन आपको करना है ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट है इन्वेंट्री पॉलिसीज एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट। इन्वेंट्री पॉलिसीज बेसिकली है ना कि सबसे पहला इन्वेंट्री तो इज बीइंग डायरेक्टली इम्पैक्टेड विद द डिमांड फोरकास्टिंग। अगर आपका डिमांड फोरकास्टिंग गलत है, अगर आप डिमांड गलत फोरकास्ट कर रहे हो, तो आप अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री भी गलत मैनेज करोगे। ये तो पक्का पक्का वेरी श्योर है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए ना, आपको एक एनालिटिकल टूल यूज करना चाहिए डिमांड फोरकास्ट करने के लिए, जिससे क्या हो कि आप एक ऑप्टिमल इन्वेंट्री लेवल मेंटेन कर पाओ और एक रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी मेंटेन कर पाओ, ठीक है। और एक्यूरेट डिमांड प्रिडिक्शन का फायदा ये होता है कि आप क्या करोगे कि ऑर्डर टाइमली ऑर्डर फुलफिलमेंट कर पाओगे। साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा ना कभी ओवर या अंडर स्टॉकिंग का केस नहीं आएगा। आप अपना इन्वेंट्री भी जो है ना वो मिनिमम रख सकते हो। मिनिमम मतलब टू जस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट, जितना रिक्वायरमेंट है एग्जैक्ट उतने इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हो। अगर आपकी डिमांड फोरकास्टिंग सही है, अगर आपकी डिमांड फोरकास्टिंग में स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा प्लस या माइनस आता है ना, तो फिर तो आपको बफर रखना पड़ेगा या सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आपका डिमांड फोरकास्ट बहुत एक्यूरेट है, देन यू कैन मैनेज टू हैव द मिनिमम एक्सेस इन्वेंट्री, है ना। ज्यादा एक्सेस रखने की जरूरत नहीं है, जो मिनिमम एक्सेस रिक्वायर्ड है ना उतना रखो। क्योंकि हाँ, क्योंकि आप फोरकास्टिंग कर रहे हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो रहेगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, बहुत ज्यादा डेविएटेड है नहीं, बहुत ज्यादा डेविएटेड है इसका मतलब आपकी डिमांड फोरकास्टिंग प्रॉपर नहीं है ना। नेक्स्ट स्टॉक कंट्रोल। स्टॉक कंट्रोल में क्या है ना कि बेसिकली अगर आप इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स अगर यूज करोगे, ठीक है, तो इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन मॉडल क्या होता है ना, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज्ड मतलब कितना इन्वेंट्री रखें कि वो ऑप्टिमम हो, ना कभी कमती पड़े ना कभी ज्यादा हो, है ना। कितनी इन्वेंट्री रखें कि ना कभी आपका बफर स्टॉक से बिलो आए, ना कभी आपका लेवल से ऊपर जाए, है ना। तो ये कैसे होता है, ये बेसिकली क्या होता है कंजम्पशन पैटर्न्स पे, लाइक इन द हॉली सॉरी इन द दिस वन फेस्टिव सीजन द इन्वेंट्री हैज टू बी मोर, बिकॉज उस समय ज्यादा बिक्री होती है। तो आपको यू हैव टू सी द कंजम्पशन पैटर्न एंड द लीड टाइम, है ना। कि जैसे कुछ पर्टिकुलर इन्वेंट्री है जो कि कोई ऐसे रीजन से या कोई ऐसे जगह से आ रहा है जहां का लीड टाइम ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री के लिए आपको क्या करना होगा कि लीड टाइम ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा रखना पड़ेगा। तो ट्राइंग टू से कि आपको इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन मॉडल यूज करना चाहिए, जिसमें क्या हो कि आप कंजम्पशन पैटर्न, लीड टाइम ऑप्टिमाइजेशन, स्टॉक कंट्रोल, ये सारा कुछ आप चेक इन करोगे और फिर अकॉर्डिंगली आप मेंटेन करोगे। बैलेंसिंग द स्टॉक लेवल यूजिंग द एनालिटिक्स इट कैन कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव्ड ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड रिड्यूस द होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। अगर आप बैलेंस स्टॉक लेवल रखते हो एनालिटिक्स को यूज करके, तो आपको पता है क्या होगा, आपकी जो है ना ऑर्डर फुलफिलमेंट वो इंप्रूव हो जाए। ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब क्या है, जितनी ऑर्डर की डिमांड हो रही है आप उसको फुलफिल कर पा रहे हो, तो ये जो रेशियो होगा ना ये इंप्रूव हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको पता है क्या होगा, होल्डिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। होल्डिंग कॉस्ट मतलब आपको बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करना पड़ेगा, आप ऑप्टिमल होल्ड करोगे, है ना। नेक्स्ट है एफिशिएंट ऑर्डर प्रोसेसिंग। अगर आप इन्वेंट्री पॉलिसीज प्रॉपर यूज करते हो और एनालिटिक्स यूज करते हो, तो आपको पता है अगर आप एनालिटिक्स यूज कर रहे हो तो आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग जो होगा ना वो भी काफी हद तक वो इम्प्रूव हो जाता है और स्ट्रीमलाइन हो जाता है। क्योंकि ना अगर आप एनालिटिक्स यूज कर रहे हो मतलब आप डेटा यूज कर रहे हो, तो क्या होगा कि जो पूरा वर्कफ्लो जो होता है ना वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है ऑपरेशन से। ऑपरेशंस मतलब मैन्युफैक्चरर से भी वो कनेक्टेड हो जाता है और इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर्ड होता रहता है। तो इससे क्या होता है ना कि आपका ऑर्डर साइकिल टाइम है ना जो वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि आपका ऑर्डर एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाता है। देयरफॉर यू कैन यूज टेक्नोलॉजी टू लेवरेज ऑल दीज एंड thus it helps in order fulfillment and enhance the customer satisfaction and loyalty.
ठीक है, दैट इज ऑल यू हैव टू रीड इन इन्वेंट्री पॉलिसीज एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट। तो इन्वेंट्री पॉलिसीज में बेसिकली पॉलिसीज में आपको रखना चाहिए कि यू शुड मेंटेन द ऑप्टिमल and you should like have a very good demand forecasting. You should have a stock control. Stock control means you should maintain the optimal stocks, means you can use inventory optimization models, ठीक है। एंड इससे फिर क्या होगा, ऑल्सो इट विल इनहेंस योर ऑर्डर प्रोसेसिंग, क्योंकि आपका क्या होगा, स्टीम लाइन हो जाएगा सारा काम, सारा वर्क जो है वो स्टीम लाइन हो जाएगा, और फिर आपका ऑर्डर साइकिल टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और एक्यूरेट हो जाएगा आपका ऑर्डर, ऑर्डर एक्यूरेसी भी इनहेंस हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज व्हीकल रूटिंग फॉर डिलीवरीज। अब जो डिलीवरी के लिए व्हीकल रूटिंग करनी है तो उसमें हाउ कैन एनालिटिक्स प्ले अ रोल। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज डायनेमिक रूटिंग एल्गोरिदम। सबसे पहले तो आप एक डायनेमिक रूटिंग एल्गोरिदम होता है जो कि क्या करता है ना, वो ना रियल टाइम ट्रैफिक जो आप ये करते हो ना, जैसे आप गूगल वगैरह मैप्स वगैरह में देखोगे कि रियल टाइम ट्रैफिक आपको बताता है कितना जैम है, कितना पीक आवर में क्या है क्या नहीं है ना। तो this is also saying the same कि if you are using the dynamic routing algorithm which is based on the real time traffic and delivery constraint, then it can help you in the efficient and adaptive vehicle routing। vehicle routing आप फिर better choose कर पाओगे कि आप इस टाइम पे रोड से आपको डिलीवरी देना बेटर होगा या रेलवे से, या what all other methods can be used। तो आपको जो व्हीकल रूटिंग करनी है ना उसके लिए you should use the dynamic routing algorithm, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि एनालिटिकल जैसे टूल्स यूज होते हैं फॉर दिस रूटिंग। इससे क्या होता है कि चूंकि दीज आर टेकिंग इनटू अकाउंट द रियल टाइम डेटा, रियल टाइम ट्रैफिक एंड ऑल दीज थिंग्स, तो इससे क्या होता है ना, डिलीवरी टाइम जो होता है ना वो काफी एक्यूरेट हो जाता है, और साथ ही साथ आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि यू नो कि विच ट्रांसपोर्टेशन विल बी बेटर, कीपिंग अ चेक ऑन द ट्रैफिक ऑफ दैट पर्टिकुलर रूट, है ना। तो कौन सा ट्रैफिक आपके लिए ज्यादा बेटर होगा कि हॉल्ट टाइम कम हो वहां पे, है ना, रेड लाइट टाइम कम हो, ये सारा कुछ आप क्या कर सकते हो, डायनेमिक रूटिंग एल्गोरिदम यूज करके देख सकते हो। फिर एक होता है लास्ट माइल डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है कि लास्ट माइल डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन कंसेप्ट जो है ना वो आप वो ब्लिंकिट वगैरह पे ही आप देख सकते हो कि क्या होता है कि आपके पास मतलब कि ऑप्शन है कि आप उसको लास्ट मिनट में भी चेंज कर सकते हो। कुछ ऐसी सर्विस आपको दी जा रही है जिसमें आप लास्ट मिनट में भी चेंज करने का आपके पास ऑप्शन है, और फिर भी आपको वो बिल्कुल विद इन द टाइम पहुंचेगा। तो इसके लिए भी आपको प्रॉपर व्हीकल रूटिंग होनी चाहिए ना। तो लास्ट माइल डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए भी पता है आपको, ऑर्गेनाइजेशन को दे हैव टू लाइक पुट अ लॉट ऑफ मनी इन दीज टूल्स एंड पुट ऑन एल्गोरिदम्स देयर, एंड बिकॉज आपको जो है ना कि वहां पर क्या करना है, आपको सर्विस रिलायबिलिटी बढ़ाना है, रियल टाइम विजिबिलिटी कस्टमर्स को साथ ही साथ ट्रैक करते हैं कस्टमर्स को। ओवरऑल आपका टारगेट क्या है, कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बढ़ाना। सो यहाँ भी लास्ट माइल डिलीवरी ऑप्टिमाइज करना इज ऑल्सो अनदर चैलेंज वेयर द एनालिटिक्स कैन हेल्प यू आउट। ओके, नेक्स्ट इज शेड्यूलिंग एंड लोड बैलेंसिंग। शेड्यूलिंग एंड लोड बैलेंसिंग मीन्स आपको लाइक अगर आप दो ट्रक भेज रहे हो, डिलीवरी कर रहे हो दो ट्रक, तो लाइक इफ द वन ट्रक इज फुल्ली ओवरलोडेड एंड द नेक्स्ट ट्रक इज लाइक इट इज गोइंग हाफ वे, तो आपको जैसे कि आपको शेड्यूलिंग कुछ ऐसे करना है। आपको पता है ये सारे जो कंपनीज है, ई कॉमर्स कंपनी, वो दे डू अ वेरी गुड शेड्यूलिंग एंड लोड बैलेंसिंग। मतलब वो क्या करते हैं ना कि दे हैव द लाइक उनका शेड्यूलिंग बहुत ये रहता है कि लाइक दे प्रॉपरली सेगमेंट की कौन सा गुड्स कौन सा डिलीवरी कब जाना है, कैसे शेड्यूलिंग होनी है ना। और उसके बाद ना लोड बैलेंसिंग का मतलब होता है ना कि अगर इस गुड को, अगर जो जैसे कि परसों जो डिलीवरी करनी है और जो आज डिलीवरी करनी है, अगर इफ इट इज फॉलोइंग इन द सेम रूट, इफ इट कैन बी डिलीवर्ड, इफ इट कैन बी लोडेड इन द सेम व्हीकल, ठीक है। तो इस तरह से करके लोड बैलेंसिंग मतलब कम, इससे क्या होना कि आपके व्हीकल्स कम से कम यूज हो, क्योंकि व्हीकल्स कम यूज होंगे तो आपका क्या होगा, कॉस्ट बचेगा, फ्यूल कॉस्ट बचेगा, है ना। तो एम्प्टी माइल्स जो होते हैं ना वो सब रिड्यूस होगा। सो शेड्यूलिंग एंड लोड बैलेंसिंग में यही डिस्कशन होता है कि हाउ कैन वी रिड्यूस द load and not load, how can we reduce the fuel consumption and also improve the environmental sustainability. So all this discussion is about the vehicle routing.
ठीक है, तो व्हीकल रूटिंग में पहला डिस्कशन हुआ कि डायनेमिक रूटिंग एल्गोरिथम आप यूज कर लो, या फिर लास्ट माइल डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन यूज कर लो, या फिर आप शेड्यूलिंग एंड मतलब या फिर नहीं सॉरी शेड्यूलिंग एंड लोड बैलेंसिंग भी आप कर सकते हो, है ना. दिस कैन ऑल्सो बी अ way to optimize your vehicle capacity utilization. Okay, and minimize the empty miles. Okay. However, there are challenges, क्योंकि आप इतना डेटा एनालिटिक्स यूज करो तो चैलेंजेस आएगा ही चैलेंजेस आएगा रिगार्डिंग सेम, कि आपका डेटा कैसा है, आपका डेटा करेक्ट डेटा है कि नहीं, आपका डेटा इंटीग्रेटेड है कि नहीं, है ना. अगर आपका डेटा प्रॉपरली इंटीग्रेटेड नहीं है या फिर क्वालिटी डेटा नहीं है, तो आपका पूरा जो आपने एनालिसिस की ना, या जो एनालिटिकल इंसाइट्स आपने जो यूज किया ना डिसीजन का, वो पूरा गलत आएगा. ठीक है. सो दिस शुड बी चेक्ड, क्योंकि आप उस डेटा की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, तो दैट शुड बी चेक. नेक्स्ट इज आपको डेटा गवर्नेंस चेक करना चाहिए. यू शुड नॉट एट ऑल यूज द सेंसिटिव डेटा फॉर योर बेनिफिट, है ना. तो डेटा गवर्नेंस और ये सब आपको डेटा रेगुलेशंस को मेंटेन करना चाहिए. यू शुड ऑब्लाई विद दैट, है ना. क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स शुड बी इंश्योर्ड. रिलायबल एंड कंसिस्टेंट डेटा शुड बी यूज्ड फॉर द डिसीजन मेकिंग. दूसरा, आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो, मींस यू शुड यूज द एडवांस एनालिटिकल टेक्नोलॉजीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस. ओके. You should educate and train the personnel to use the to help them know the benefit of the technology adaptation and change management, is the key solution. We already have discussed in the chapter number 3 that change management is the solution. The culture of the organization need to be changed. The organization need to move towards the organization need to move to data analytics, adoption of the data analytics. Also, the visibility in the supply chain should be increased, because till now we have limited visibility across the supply chain, which is a problem, which is a challenge in tracking the inventory. Therefore, one should keep a check on that the transportation should be monitored and the demand fluctuations should be managed. So data analytics can be used here as a solution to enable the transparency and responsiveness. So that's it. This is the chapter number 5. Any issue with this chapter? मैम Yes. मैम एक बार इन्वेंटरी पॉलिसीज क्या होता है ये समझा दो बस, बाकी हाँ. इन्वेंटरी पॉलिसीज, एक मिनट मैं एक बार बुक में चेक कर देती हूँ क्या दिया इन्वेंटरी पॉलिसीज में. बेसिकली यहाँ तो आपको जो पढ़ना था, वो आपके इन रिगार्ड टू मैम ऑल्सो ऑर्डर फुलफिलमेंट के बुक में पॉइंट्स आर डिफरेंट, लाइक सेंट्रलाइज्ड फुलफिलमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट, centralized fulfillment, decentralized, and analytics driven fulfillment strategies. अच्छा, ऑर्डर फुलफिलमेंट. अच्छा, सबसे पहले आपने क्या पूछा? इन्वेंट्री पॉलिसीज. इन्वेंट्री पॉलिसी का पहले भी कोई इश्यू आया था.
एक आपने पूछा क्वेश्चन इन्वेंट्री फुलफिलमेंट से और दूसरा ऑर्डर फुलफिलमेंट, इन्वेंट्री पॉलिसीज एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट, है ना? ओके ठीक है। So in our PPT slide, we have discussed in regard to inventory policies, we have discussed कि the first is demand forecasting, means the proper demand should be made, then only inventory, a proper inventory management can be done, है ना? Then we discussed on the stock control that there should be a balance between, there should not be an excess inventory. तो जैसे जेट वगैरह लगाना है तो इसके लिए क्या है कि आपका इन्वेंट्री जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, है ना? एक्सेस इन्वेंट्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ता है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एफिशिएंट ऑर्डर प्रोसेसिंग होना चाहिए, कि ऑर्डर जो मतलब ऑर्डर जो प्लेस्ड है उसकी जो प्रोसेसिंग है वो इतनी एफिशिएंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्डर प्रॉपरली जो प्लेस्ड ऑर्डर है वो अगर एफिशिएंटली प्रोसेस हो रहा है तो उससे क्या होगा कि आपका लीड टाइम रिड्यूस हो जाता है, और साथ ही साथ इन्वेंट्री जो है वो एक्सेस नहीं रखना पड़ता है ना। तो दिस वाज द डिस्कशन दैट वी डिड इन द दिस वन इन द पीपीटी। इन्वेंट्री पॉलिसीज में बेसिकली आपको ये समझना है कि एक्चुअली मैं इसमें इतना डिटेल में नहीं गई थी, बट इसमें ना इसका क्वेश्चन कभी मुझे लग रहा है ऐसा क्लास में भी किसी बच्चे ने पूछा है, तो दैट्स व्हाई आई थॉट टू डिस्कस इन डिटेल हियर कि इन्वेंट्री पॉलिसीज में आपको ये समझना है ना कि एक्चुअली सारे ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज। ये मैंने जो डिस्कस किया है द बुलेट पॉइंट्स इन द पीपीटी की डिमांड फोरकास्टिंग है, स्टॉक कंट्रोल है, दिस इज ऑल शोइंग कि आपका इन्वेंट्री पॉलिसी के बारे में तो नहीं बता रहे, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये चीज अगर आप करोगे तो इट विल बी बेटर फॉर द, एंड दिस इज ऑल द डिमांड ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, है ना? और इससे आप बेटर ऑर्डर को फुलफिल कर पाओगे, ठीक है? बट इन्वेंट्री पॉलिसी अगर आप डिस्कस करो पर्टिकुलरली पॉलिसी, तो अपना डिस्कशन जो होगा वो ये होगा कि इन्वेंट्री पॉलिसीज में आप जैसे देखोगे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो जिट पर काम करते हैं, तो वो अपना इन्वेंट्री जो है ना वो जिट पर मैनेज करते हैं, जस्ट इन टाइम पर मैनेज करते हैं। तो वो अपने इन्वेंट्री में उतना ही सामान रखते हैं जितना उनको लगता है कि ऑर्डर्ड है। और जस्ट इन टाइम वाले ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंट्री मैनेज कैसे करते हैं कि वो अपना इन्वेंट्री अपने मतलब एक्सेस इन्वेंट्री कतई नहीं रखते हैं वो। और साथ ही साथ वो क्या करते हैं कि मतलब वो अपने सप्लायर से इस तरह से इंटीग्रेटेड रहते हैं, वो अपने सप्लायर से ऐसे कोलैबोरेशंस रखते हैं कि जस्ट एज द ऑर्डर इज बीइंग प्लेस्ड द इन्वेंट्री इज like within the whatever the short span of time, within that time the inventory is like there in the store, ठीक है, there in the warehouse, ठीक है? तो यही ये क्रक्स था जो हमने डिस्कस किया है अपने पीपीटी में, दैट वाज द क्रक्स की डिमांड फोरकास्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए, स्टॉक कंट्रोल होनी चाहिए, एफिशिएंट ऑर्डर प्रोसेसिंग होनी चाहिए। बट इफ वी डिस्कस ऑन द एक्चुअली द इन्वेंट्री पॉलिसी, तो इन्वेंट्री पॉलिसीज में वी कैन डिस्कस ऑन द वेरियस पॉलिसीज दैट आर बीइंग यूज्ड बाय द organization. So here in the discussion, I just have used the real world example of Walmart.
तो वॉलमार्ट के एग्जांपल से एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज द पॉलिसी दे आर मेंटेनिंग एंड हाउ लाइक दे आर एबल टू फुलफिल द ऑर्डर. ठीक है. Again telling you that I'm not here that I have discussed. जो दो तीन पॉलिसीज यहाँ पे जिट हो गया या EOQ हो गया, ये जो भी पॉलिसीज whatever policies we are discussing in regard to Walmart. This is not the policies that all the organization are using. Actually, the organizations, they are having their own policies. It is not that there is a standardized policies that all the organizations using. No, it is not like that. All the organizations, they are having their own policies. Okay, but the common policies that we have already discussed, and also here I'm just picking up a case study, and in regard to that case study, I'll be discussing what policies they are using and how they are fulfilling the order. And similarly, I'm instructing you that you don't have to learn the policies, rather you just have to know ki how the policies can help and what are the policies that like what should be done in the data analytics and where the data analytics should be used to get the order fulfilled. Okay, so just see the I've shared the screen, the word file, if it is visible to you all. Yes, ma'am. Okay. So see the Walmart case study I've taken. So Walmart, which is one of the largest. It's not visible. Not visible. I'll reshare again. It is visible. I can see challenges and solution like the PPT that ma'am shared No, a while no, ago. I'm not sharing the PPT. I'm sharing the Word file. Yes. It is stuck at the PPT. I'll reshare again. I'm closing the I file. think so. I'm closing the file and I'm resharing again. I'm trying to show you a Word file where the heading will be the inventory policies and order fulfillment at locations. Okay. Yes, it is visible. Nikita? Yes, ma'am. Visible. All right. I don't know why Okay. it's not visible. I'll just try to rejoin. I don't know. So everyone else is able to see the file? Yes. Yes, ma'am. The Word file I'm talking, not the PPT or anything else. The Word file. Yes, ma'am. The word file is visible. ठीक है. Okay. So Nikita, you can just rejoin. All right. Okay. Now it is visible. Yes, yes. All right. So I'm starting with the discussion. I'm discussing a case study of Walmart. So Walmart, which is one of the largest, the largest retailer, it is like it is renowned for its, it is using the sophisticated inventory management practices, and has an efficient supply chain. Sorry. And it has an efficient and it has an efficient supply chain operations. Okay, so the company, it basically utilizes analytics driven inventory policies, right? Data driven analytics policy, data driven policy, you can just say data driven inventory policies it is using, and it is using order fulfillment strategy to meet the customer demand while minimizing the holding cost and stock out. So what it is doing, so पहला पैराग्राफ समझ में आया. पहला पैराग्राफ दे आर डिस्कसिंग कि वॉलमार्ट जो है इट इज अ रिटेलर कंपनी एंड इट इज यूजिंग अ सोफिस्टिकेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. ठीक है, और इसकी जो सप्लाई चेन ऑपरेशन है वो काफी एफिशिएंट है. ये कंपनी जो है वो डेटा एनालिटिक्स पॉलिसी यूज करती है. मींस इट इज यूजिंग डेटा ड्रिवन एनालिटिक्स इन इट्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट. ठीक है, और ऑर्डर फुलफिलमेंट स्ट्रेटेजीज यूज करती है. स्ट्रेटेजीज मींस जो हमने जैसे डिस्कस किया था कि ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट है ना, कि जैसे ऑर्डर आता है
as soon as the order is placed, the order starts processing. ठीक है, तो ऑर्डर फुलफिलमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से दे आर एबल टू मीट अप विद द कस्टमर डिमांड एंड ऑल्सो मिनिमाइज द होल्डिंग कॉस्ट, क्योंकि they work on these policies. Okay, तो क्या इसकी पॉलिसी क्या है? फर्स्ट पॉलिसी है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजर्स. सो वॉलमार्ट इट implements a just in time inventory management approach where inventory levels are closely aligned with the customer demand. So by leveraging advanced analytics and real time sales data, okay, so you can just see what it is doing. It is using the advanced analytics and is tracking the real time sales data. एक एक स्टॉक का डेटा इनके पास रियल टाइम में मेंटेन है. ओके, एंड वॉलमार्ट ऑप्टिमाइजेस इट्स इन्वेंट्री लेवल टू रिड्यूस द एक्सेस इन्वेंट्री व्हाइल इंश्योरिंग द प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी. है ना, इन्वेंट्री कॉस्ट भी रिड्यूस हो रहा है, साथ ही साथ इट इज कीपिंग अ चेक की इनके पास ऑल हमेशा जो है वो प्रोडक्ट अवेलेबल है ना. सो फॉर इंस्टेंस Walmart it employs a point of sale POS जिसको बोलते हैं point of sales data analytics. point of sales data analytics में क्या होता है ना कि आपका रियल टाइम में डेटा ट्रैक होता है कि कितनी सेल हो रही है, मतलब एक एक डेटा स्टॉक जो निकलता है उसका डेटा रहता है इनके पास, है ना. तो Walmart it employs the point of sales data analytics to monitor sales in real time and automatically trigger replacement order. automatically वो जो है ना ऑर्डर आ जाता है to like replenish, okay, when inventory level reach the predefined thresholds. So this JET approach enables Walmart to minimize the holding cost and optimize the cash flow while responding quickly to the changes in customer demand. तो इनकी एक ये पॉलिसीज थी, हाउ दे आर ऑर्डर टू मीट अप द हाउ दे आर एबल टू मीट अप द ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड हाउ दे आर एबल टू हैव एन एफिशिएंट दिस इन्वेंट्री मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पॉलिसी दैट इज नोन एज JET. दूसरा पॉलिसी इनका है economic order quantity and demand forecasting model. So Walmart it utilizes economic order quantity. If you remember economic order quantity हमने पढ़ा था deterministic model में, right? तो so economic order quantity economic order quantity and demand forecasting. So Walmart it is able to utilize economic order quantity model and demand forecasting techniques to optimize the order quantity and reorder point of products in its inventory, है ना. तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए दूसरा पॉलिसी व्हाट दे आर यूजिंग इज दे आर यूजिंग द इन्वेंट्री ऑर्डर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल to know the demand, okay, and to also optimize the order quantity and the reorder point. So EOQ, what it is doing, EOQ is helping the Walmart to determine the most cost effective order quantity, okay, that minimizes the total inventory cost including the ordering cost and the holding cost, है ना. तो इससे क्या होगा कि आपका इन्वेंट्री कॉस्ट भी लो हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी है ना, and the holding cost. So further Walmart employs the sophisticated demand forecasting model that leverages historical data sales, market demand, market trends and external factors to forecast future demand accurately. So these models enable Walmart to anticipate the changes in the customer demand and adjust inventory level accordingly, reducing the risk of stockouts or excess inventory. The third policy is inventory optimization techniques. So Walmart it employs various inventory optimization techniques to balance inventory level across its distribution center and stores, so ensuring efficient replenishment and order fulfillment process. So this includes basically safety stock management, that is Walmart maintains a basic safety level and mitigate the stockouts, ठीक है. Similarly, dynamic demand forecasting means it updates its demand forecast based on the real time sales data and market dynamics. तो इस तरह करके ये अपना डिमांड का भी फोरकास्टिंग कर लेता है, ठीक है. So example has been given here, Walmart's cross docking strategy. तो Walmart cross docking strategy जो है वो क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ. Basically it exemplifies its commitment to efficient inventory management and order fulfillment. So
क्या करता है ना कि ये एग्जिम्प्लीफाई करता है कि इट इज एबल टू मीट अप इट्स कमिटमेंट एंड इट इज एबल टू हैव एन एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट. सो क्रॉस डॉकिंग में क्या होता है ना कि it basically involves receiving incoming goods at distribution center and immediately transferring them to outbound transportation vehicles for delivery to stores, bypassing the need for storage in inventory, right? So by implementing this cross docking समझ रहे हो आप, यहाँ से लिया वहां को दे दिया. डॉकिंग का मतलब वही होता है. और क्रॉस का मतलब होता है कि यहाँ मतलब फटाफट यहाँ मंगवाया, इनकमिंग गुड्स को अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे मंगवाया, इमीडिएटली उसको स्टोर नहीं किया जा रहा, वेयर हाउस में रखा नहीं जा रहा है, बल्कि इमीडिएटली उसको ट्रांसफर कर दिया जा रहा है तो अदर आउटबाउंड ट्रांसफर जहां भी भेजना है वो वाले ट्रांसपोर्टेशन में. मीन्स यहाँ पे आपका लीड टाइम कम हो गया, यहाँ पे आपका स्टोरिंग कॉस्ट बच गया है ना. तो इस तरह का अरेंजमेंट वॉलमार्ट ने कर रखा है और इसी को तो कहते हैं क्रॉस डॉकिंग. तो क्रॉस डॉकिंग उनकी स्ट्रेटेजी है कि उन्होंने अपना जो है कमिटमेंट जो है कि टू हैव एन एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसको एग्जाम्प्लीफाई किया हुआ है और इसको क्या करते हैं कि वो क्रॉस डॉकिंग के थ्रू मेंटेन करते हैं ना. तो वॉलमार्ट दस रिड्यूसेस द इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, मिनिमाइजेस द हैंडलिंग कॉस्ट. ऐसा करने से क्या क्या होता है, इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो जाता है, हैंडलिंग कॉस्ट कम हो जाता है और स्टोरेज एक्सपेंसेस कम हो जाता है एंड एक्सेलरेट्स ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेसेस. So this streamlined approach enables Walmart to maintain the lean inventory levels while ensuring timely delivery of products to its store, ultimately enhancing the customer satisfaction. Thus, you can just see that the advanced analytics driven inventory management, advanced analytics अगर inventory policy में use होगा, जो भी आप inventory policy use कर रहे हो उसमें अगर आप analytics use करोगे तो और साथ ही साथ ऑर्डर फुलफिलमेंट स्ट्रेटेजीज रखोगे तो एंड इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज करोगे तो फिर क्या होगा कि यू कैन जस्ट सी द वॉलमार्ट केस दैट वॉलमार्ट डेमोन्स्ट्रेट्स अ कमिटमेंट टू एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन एक्सेलेंस. So by leveraging the data analytics and optimization tools, Walmart continues to optimize its inventory level, minimizing the cost and enhancing the customer service, setting the industry standard for the inventory management best practices. So by this example, I have just tried showing कि इस तरह की इन्वेंट्री के पॉलिसीज होते हैं और इन सारे पॉलिसीज में ना अगर आप डेटा एनालिटिक्स लगाते हो तो आप देखोगे कि आपका रिजल्ट जो है वो कितना एम्पलीफाई होकर आता है और इस तरह से आप इंडस्ट्री में भी बेंचमार्क सेट करते हो और ऑर्डर फुलफिलमेंट भी आपका बेटर हो पाता है. If you are satisfied with this? Yes, ma'am. Okay, all right. And the next question was around the order fulfillment only. Okay, you want to ask what is written in the book. So order fulfillment strategy, navigating centralized and decentralized models. So in the centralized fulfillment, it involves consolidating inventory in a central warehouse, streamlining operations and minimizing the duplicate stocks. So this model often capitalizes on economies of scale leading to cost efficiency. तो basically ये दो मेथड बताया हुआ है, दो या तीन जो भी है कि centralized fulfillment में आप क्या करते हो कि all your inventories are being centralized managed. Okay, central warehouse है, वहां से आप streamline operation करते हो और आप जो है कि डुप्लीकेट स्टॉक को मिनिमाइज करते हो. मतलब एक ही एरिया में दो तीन जगह पर सेम स्टॉक मेंटेन नहीं होगा, है ना. एक जगह पर अगर उस एरिया में एक जगह पर वो स्टॉक मेंटेन है तो वो सेम स्टॉक कहीं और एट द प्रॉक्सिमिटी मेंटेन नहीं होगा, है ना. rather you have to use the vehicle and all these things to transport. Okay, तो इसके अपने एडवांटेजेस और चैलेंजेस है. अगर आप डिसेंट्रलाइज मतलब हर जगह छोटे छोटे मल्टीपल रीजनल लेवल पे या लोकल लेवल पे आप अगर अपना जो वेयर हाउसेज रखोगे तो उससे क्या होगा कि आपका शिपिंग टाइम भी रिड्यूस होगा और आप फटाफट कस्टमर को डिलीवर करोगे तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा. तो इस मॉडल से क्या होता है ना कि आप प्रोडक्ट को बहुत जल्दी डिलीवर कर पाते हो, है ना. तो इससे क्या होता है कि आपका डिमांड बढ़ता है, फास्टर डिलीवरी होती है ना. तो ये डिसेंट्रलाइज्ड वे होता है, ठीक है, जो कि आजकल आप देखोगे कि फ्लिपकार्ट वगैरह बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं. वो आप देखोगे यू विल नेवर नो, आपको पता भी नहीं चलेगा और
उसी बिल्डिंग में दे हैव टेकन अ सिंगल रूम, किसी भी बिल्डिंग में आप देखोगे कि दे हैव टेकन अ सिंगल रूम एंड देयर दैट रूम इज अ वेयर हाउस फॉर दैट फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो इस तरह करके वो काफी एक सेम लोकेशन में काफी काफी वो छोटे छोटे से मल्टीपल अपने वो वेयर हाउसेज रखते हैं, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना रखते हैं। ठीक है, तो इसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, सिमिलरली एनालिटिक्स ड्रिवन फुलफिलमेंट स्ट्रेटेजी, तो दिस इज अनदर थिंग। तो this is discussing about the एनालिटिक्स ड्रिवन फुलफिलमेंट स्ट्रेटेजी। इसका मतलब कि एनालिटिक्स अगर आप यूज करोगे तो आप डेटा वगैरह निकाल करके, ब्राउजिंग हिस्ट्री देख करके, यू कैन यूज द डेटा एनालिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी टू ऑप्टिमाइज द फुलफिलमेंट, इंश्योरिंग अ सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस व्हाइल मिनिमाइजिंग द ऑप्टिमल कॉस्ट। ये तो बस आपको वही बता रहे कि फुलफिलमेंट स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो अगर आप डेटा कलेक्ट करते हो, तो आप अपने कस्टमर को कैसे बेटर सेटिस्फाई होगा, वो पर्टिकुलर कस्टमर कैसे बेटर सेटिस्फाई होगा, इसका वे आउट आप निकाल सकते हो। तो ये आपका इस एंड पैराग्राफ में था। आप देखोगे केस स्टडी जो पहला है अमेजन फुलफिलमेंट सेंटर, उसी के रिगार्डिंग है। वॉलमार्ट का केस भी मैंने डाला हुआ है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वॉलमार्ट कैसे अपने इन्वेंट्री को मैनेज करता है। Okay, any other question from chapter number 5? No. So here we'll be taking 5 minutes break. It's 3:05. We'll be meeting at 3:10, and then we'll start our chapter number 6 and 7. Okay. So just relax for 5 minutes. We'll be meeting in next 5 minutes. We'll be meeting at 3:10. Okay. Okay.